afternoon to all. Thank you for joining us for today's webinar. I am Monika, Assistant Professor, UIPSR, BFUHS. Welcome you all on behalf of UIPSR. First of all, I would like to welcome our valuable speakers, Dr. Savita, Deputy Director, DRME, Haryana, Professor Dr. G.D. Gupta, Director-cum-Principal, ISF College of Pharmacy, and all staff members and students of UIPSR and ISF College of Pharmacy. I also welcome our worthy principal, sir, Dr. Viney Chawla. I welcome our co-coordinator, yes, sir, we can start now. The recording is on at YouTube. Ms. Monika, please, you can proceed. Okay, very good afternoon. Okay, thank you. Thank you for joining us for today's webinar. I am Monika, Assistant Professor, UIPSR, BFUHS. Welcome you all on behalf of UIPSR. First of all, I would like to welcome our valuable speakers, Dr. Savita, Deputy Director, DRME, Haryana, Professor Dr. G.D. Gupta, Director-cum-Principal, ISF College of Pharmacy. I also welcome our worthy principal, sir, Dr. Viney Chawla. I welcome our coordinator, Professor Dr. R.K. Narang, Vice Principal, ISF College of Pharmacy. I welcome co-coordinator, Dr. Pooja Chawla, Professor, ISF College of Pharmacy. I also welcome our staff members and students of UIPSR and ISF College of Pharmacy and also other institutes. Today we are presenting webinar on pain management by Dr. Savita and stress management by Professor Dr. G.D. Gupta. Before going further, I would like to invite our principal, sir, for his welcome address. Sir, please. Good afternoon, all. It is a matter of great pride and privilege for me to be present here for the national webinar on pain and stress management. As you all know, during the last 2 years, especially in the pandemic, we have seen a lot of stress and lot of pain in the entire world. So now that we are recovering from that phase, it would be quite apt to conduct a seminar of this type, wherein Dr. Savita from Haryana DRME office has consented to give a lecture on pain management. At the same time, Dr. G.D. Gupta, Director-cum-Principal, ISF College of Pharmacy, has consented to give his lecture on stress management. I welcome wholeheartedly for this seminar, and I'm sure that the deliberation of today's webinar will be fruitful to one and all. I extremely express my level of gratitude for sparing their valuable time. I know the speakers are very busy. So without wasting a lot of time, I would hand over the mic back to Ms. Monika for further proceedings. Thank you. Thank you, sir. Now I would hand over to Dr. Pooja Chawla to introduce our first speaker, Dr. Savita. First of all, I welcome Dr. Savita for our today's webinar. Thank you so much, ma'am, for sparing time for us. I would like to welcome Dr. Viney Chawla, Principal UIPSR, who is in collaboration with us today. I welcome Principal Sir Dr. G.D. Gupta for sparing his time for today's lecture. As you already mentioned by Ms. Monika, his lecture is on stress management. I welcome Ms. Monika and all the coordinating members, all the team members who have joined with us today. So it's my privilege to introduce our first speaker of the day, Dr. Savita.
Dr. Savita Mandhar is Deputy Director at Directorate of Medical Education and Research, Haryana. She has obtained master's degree in physiotherapy with ortho specialization from Maharishi Markandeshwar University, Ambala. She started her career as assistant professor in Postgraduate Institute of Medical Sciences, Pandit B.D. Sharma University of Health Sciences, Rohtak, and taught there for 4 years. She has delivered lectures and papers in various national seminars. Then she was deputed as Deputy Director in Directorate of Medical Education and Research, DMER Haryana at Panchkula, and Executive Officer at Ayushman Bharat Haryana Health Protection Authority, that is ABHHPA Haryana. At DMER, she played key role in the enactment of the Haryana Nurses and Nurse Midwives Act 2017 and various policies related to nursing and paramedical education in the state. At ABHHPA, she handled the administration of the department along with policy, legal, monitoring, and evaluation branches. She received the prestigious State Level Good Governance Award 2020 from Honorable Chief Minister Haryana for outstanding work in Ayushman Bharat scheme, which is the ambitious flagship scheme of Government of India. She is also the recipient of Women Excellence Achievement Award 2020 for outstanding contribution in health and medical field. She has been actively involved in policy and planning in medical education and research and university health access at state level in coordination with central government level. So once again, I welcome Dr. Savita. We are really delighted to have you with us today. Thank you so much, ma'am, for accepting this invitation. Now, without wasting much time, I would like to invite ma'am for her valuable lecture. Thank you so much, ma'am. A very warm good afternoon to all of you. Thank you. I would like to thank the organizers, Dr. Viney and his team, for providing me this opportunity to present before you this lecture of pain management, which is a very hot topic nowadays. And pain is because everybody is suffering from pain here and there. So pain management we'll be discussing at length today. Is my screen visible, ma'am? Dr. Pooja, is it visible? Okay. Yes. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, it's visible, but
joints, or superficial or deep tissues of the body. The pain is aching type and is often constant in nature. The pain may be dull or it may be sharp shooting pain. The pain is often worse with movement of the part in which the injury or the source is there. The pain generally is well localized and the patient and clinician can easily localize this. This is the area of the pain which has to be treated. The examples of such somatic pain are sprains, headache, arthritis. Pain medication which is given, most pain medicines will help in such cases, and if severe, stronger medication can be given. Then visceral pain. The source of visceral pain is internal organ or the viscera of your body. The pain, this type of pain is constant and cramping, and the patient has aching and burning sensation. The pain is poorly localized. You can't pinpoint an area of tenderness in such type of pains, and pain is generally referred. Like if the patient is having problem in kidney, then he might experience backache as well, and he might experience stomach ache as well, and he may experience pain in the renal angle, that is side of your body. Organs of thorax and abdominal cavity generally have such type of pains, usually as a result of stretching or infiltration or compression. Examples are liver in capsule distension, bowel obstruction, or kidney stone pain. Pain medication given are stronger pain medications are required in visceral pain as compared to the somatic pain. Now, both somatic and visceral pains, they travel along the same pathways. So, pain stimuli arising from the viscera is perceived as a somatic in origin. So, you have to differentiate whether the pain is somatic or the visceral pain. Proper assessment part is necessary in that case. This can be confused by the brain and is often described as the referred pain. Like if the patient is having backache and we attribute it to something, some pathology in back, and ultimately when you go for ultrasound and all, you get to know that, oh, it was the renal calculi which was causing the pain. So you have to rule out all the possibilities while assessing the patient for planning the treatment part. Now, bone pain. The source for bone pain are sensitive nerve fibers on the outer surface of the bone. This pain is poorly localized. It's aching, deep and burning pain. It tends to be constant and it worsens with the movement. This type of pain is common with malignancy spread to bone and severe osteoporosis. These such pains can lead to pathological fractures also. And vertebral metastasis or vertebral cancer can lead to cord compression. Cord compression then ultimately will lead to neurological pain also. Then pain medication, here are stronger pain medications are required. Opiates with NSAIDs as an adjunct are given for the bone pain. Then if we go for the neuropathic pain, source of the pain is nerves, maybe a central or the peripheral. This is caused by disturbance of function or pathological changes in a nerve of the patient. It does not respond well to standard analgesics. This pain is described as burning, sharp shooting or tingling pain. Examples are in diabetic patients, they are having diabetic neuropathy. In the patients who have undergone amputation, they feel that limb is present and they feel pain is there in that limb, that is phantom limb pain. That is also a type of neuropathic pain. And in cancer patients, you can see neuropathic pain. Pain medications prescribed in such cases are opiates, tricyclic antidepressants or other adjuvants, which we will be discussing later in detail. Now, the categories of pain on the basis of pathophysiology. It can be a nociceptive pain from somatic and visceral structures, or it can be a neuropathic pain from the nervous system, which we right now discussed. Nociceptive, if the pain is, it is caused by invasion and or destruction and or pressure on the superficial somatic structures like skin, deeper skeletal structures such as bone, muscles, and visceral structures and other organs.
Types are superficial somatic pain, deep somatic pain, and the visceral pain. Neuropathic pain is caused by pressure or destruction of the peripheral, autonomic, or central nervous system structures, and the radiation of pain along the dermatomal or peripheral nerve distribution. The characteristic symptom of the neuropathic pain is it will be a radiating pain. The pain will radiate along the course of the nerve if a nerve is involved, or if a nerve root is involved, along the whole distribution of the nerve root, patient will be experiencing the pain. Often described as burning or deep aching pain, and it is associated with other symptoms such as dysesthesia or lancinating pain, or the paresthesia, loss of sensation in the distribution of that nerve. Now, what are the effects of pain on the body? We may have a sympathetic responses, or we may have a parasympathetic responses in the body of the patient. In sympathetic responses are pale nature and increased blood pressure of the patient, increased pulse will be there, respiration will be high, skeletal muscles will be tense, and there will be diaphoresis, excessive profuse sweating will be there. Or there may be parasympathetic responses in which the patient might experience decrease in a normal blood pressure range, decrease in the pulse, patient may experience nausea and vomiting, weakness might be there might be pallor, and there might be loss of consciousness in the patient. These are the parasympathetic responses to the pain. Now, there is a whole pain cycle. We may also call it as a pain spasm cycle. Whenever a patient is having pain, like if I have a pain in my elbow region, what I'll do, for guarding, I will not move that part. Guarding is for protection. The person tries not to move that part. Because of pain, the muscle goes into spasm, and inflammation is there because of any underlying cause. So because of guarding, not moving that part, my muscle around that area, that will go into spasm, it will tighten. Because of tightening of the muscle and inflammation in that part, restricted mobility will occur in that part. Initially, I myself was not moving that part, but now because of muscle spasm, I am not able to move that part. Now, because of that restricted mobility, what will occur? Because I am not moving these muscles, I am not using these muscles, I will get muscle weakness. Now, because of muscle weakness and restricted mobility, what will happen? It will lead to loss of normal function of that muscle. When this cycle is going on, patient will experience psychological symptoms like anger, frustration, helplessness, because he is having pain, he is having muscle spasm, he is having loss of normal function, he is not able to do his normal daily activities. So because of all these things, he again will experience pain. So this is whole pain cycle which will again lead to guarding, muscle spasm. So this pain spasm cycle needs to be broken down to get relief from the pain for the patient. Now, the assessment of pain, as pain is no such quantity which can be quantifiable. We can't say 1 kg of pain or 10 kg of pain I am experiencing. So we have to devise some methods or scales to assess the pain, so that when patient comes to me with pain, I will see, okay, I'll give this medicine. Then again, when he comes for retreatment, or again, so we can reassess whether there is relief or not. To check that, we have to assess the pain. So some methods have been devised to assess the pain, like numeric pain rating scale is there, visual analog scale is there, then the faces scale is there, then representation on body chart, and then McGill pain questionnaire is there. They are internationally approved assessment tools for assessment of pain. First of all, numeric pain rating scale.
we take a scale of 0 to 10, where 0 stands for no pain and 10 stands for maximum possible worst imaginable pain. So we ask the patient to mark on this scale how much pain he or she is experiencing. We assess the pain, we give the treatment, and the next time the patient when comes for follow up, we ask how much relief is there. Again we give him or her the pain scale, and again we ask him to mark how much pain he or she is experiencing. So in this way we can quantify the pain. Some patients are unable to do this only with verbal instructions, so we show them, okay, this is the scale, this is how you have to point to the number, how much pain you are experiencing, to the intensity of your pain. If the patient is illiterate, or if the patient doesn't understand your language, or if the patient is a child who doesn't know 0 to 10, then you can use a Wong-Baker Faces Pain Rating Scale. In this scale, it uses color coding as well as it uses expressions of the face to help the patient to describe his or her pain. 0 pain or no pain, there is a green face with a smile with the maximum worst imaginable pain. There is a sad face which is red in color. In between is light green, yellow and orange colors to quantify the pain or to assess the pain. The patient is asked to choose the face which best matches how he or she feels or how much they feel hurt. Now the body chart. This is a very good assessment tool for the patients having pain in multiple areas of body, or the patients having chronic pain syndromes. You give such body chart to the patient and you ask them to mark on which area he or she is experiencing pain. You can give a color coding also, like it was in the faces scale. Okay, red for the maximum pain, and like light orange or dark orange for the medium or moderate or mild intensity of the pain. Later on, when the patient comes for follow-up, then again you can give the same body chart and ask the patient to then again mark the pain. You can check how much improvement has occurred. Do you need to modify the treatment plan? Do you need to change the medication, or the same medicine is helping and it should be continued or discontinued if the patient is perfectly fine now? Now there's McGill Pain Questionnaire. It's a questionnaire which is composed of 78 words which respond, and the patient is asked to respond and choose the words which best describe their experience of pain. On basis of that, a score is generated, and the score is from 0 to 78, where 0 stands for no pain and 78 stands for severe or maximum pain. This questionnaire is a self-reporting scale used for the measurement of pain. You give the questionnaire to the patient, he marks. There are 78 words, he will mark, and then you can, in under 20 subheadings, the patient will mark, and then you will get to know how much pain the patient is having. So this was the assessment of the pain. Now coming to the actual management of the pain. Pain management actually is a multidisciplinary thing. Not only medicines, not only a single therapy can help in prevention of the pain or treatment of the pain. It has to be a holistic multidisciplinary approach to help the patient relieve of the pain. Now, what are the goals of pain management therapy? What do we want to achieve with pain management therapy? Is it only pain, decrease in pain? No. Decrease in pain plus we need to decrease the healthcare utilization. We need to improve the functional status of the patient, increase the ability to perform his activities of daily living, return to the employment, decrease shopping for care, cost cutting out of pocket expenditure of the patient for the care or for the pain, and decrease emergency room visits. All these goals we are looking at when we are talking about pain management. So these goals provide a bigger picture of pain management. Now, what is the multidisciplinary approach for the pain management? The management of pain requires multidisciplinary approach, requires a whole team of specialists
of many professionals to achieve a pain relief in the patient. The multidisciplinary team may consist of the physician, the physiotherapist, pharmacotherapy, psychotherapy, surgery, yoga, and other therapies such as dry needling, acupuncture, pet therapy. These all have been used effectively in the treatment of pain. So depending upon the condition of pain, severity of pain, condition of the patient, we have to take a multidisciplinary approach for the pain. And in this pain management team, the patient and his caregivers and family have also to be included, because pain only medicine, only prescribing medicine and prescribing treatment, you have to do this, you have to do that exercise, you have to do that yoga, you have to get dry needling, only telling that will not relieve the patient of the pain. You have to teach the patient how to take medicine, or if the patient is so debilitated, then you have to include his family or his caregivers in the pain treatment approach. Now, pain management medicines are required, then physical therapy may be used, then lifestyle modifications can be used. Then if the patient is not responding to medicines or physical therapy or conventional therapy, I would say, then maybe he might have to go for surgical procedures like nerve blocks to relieve the patient of the suffering. Now, pharmacological treatment of pain. Initially, we'll start with the lowest effective dose of the drug with the simplest possible route. We'll start with the simplest single agent and maximize its potential before adding other drugs. Use of WHO's stepwise approach, I'll be discussing it, also called as the WHO's analgesic ladder, you might as well knowing as well. Then you'll re-evaluate and adjust medicine. You have now, let's suppose you have prescribed the simplest route with a lowest effective dose. Then you'll re-evaluate the patient, whether the patient is having relief or not. Then you'll adjust the medication and treatment protocol at regular intervals as and when necessary. Do not stop pain medication in terminal patients that, oh, he's going to die as well also. No, you don't have to stop medication, just change the route if needed, but medication has to be given. Talking about the WHO's ladder, pain ladder, there are 3 stages: for mild pain, for mild to moderate pain, and then from moderate to severe pain. For mild pain, we will give non-opioid drugs with or without the adjuvant therapy. For mild to moderate pain, we'll give weak opioids with or without non-opioids and with or without adjuvant therapy. For moderate to severe pain, we will go for strong opioid drugs with or without non-opioid drugs and with or without adjuvant therapy. Adjuvant therapy may be with drugs or it may be with other forms of treatment, which we'll be discussing later on. Now, coming to analgesics or the non-opioids, there are 3 types of non-opioids analgesics. They are salicylates, NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and acetaminophen. Then there are non-opioids which are used in full doses for the most part. They all have a ceiling effect to their analgesia. That is, a maximum level of analgesia is fixed, which we can achieve with a non-opioid. Beyond that, if we give more of the medicine, no, we won't get more of the analgesia. There is a fixed limit, a maximum dose past which no further analgesic action can be expected. Then COX-2 inhibitors may be associated with fewer side effects, and cytoprotection is not required with non-opioid drugs until and unless the patient symptoms are suggestive of GI distress or the patients who are at high risk of ulcer formation. In such patients, cytoprotection with sulcrafate and misoprostol may be given. Then talking about weak opioids,
Useful drugs for pain relief are codeine and codeine combination products, oxycodone combination products, and dextropropoxyphene is not to be used. Then talking about analgesic strong opioids, useful drugs are morphine, hydromorphone, fentanyl, oxycodone, and methadone. The drugs which are not to be used for pain relief are mepridine, aniline, and pentazoxine. Then opioid dosing. Opioid analgesia is most effective when titrated to effect. Effective doses are highly variable between the patients. So you have to decide judiciously how much is the effective dose which has to be given to a certain patient. Standard doses may be insufficient in extreme cases. When used properly for analgesia, addiction occurs in less than only 1% of the patients. That means opioid drugs do not cause addiction unless used judiciously. Now, adjuvant analgesics, which may or may not be used as per the WHO ladder, they are also termed as the co-analgesics. These are medications which are, when added to the primary analgesics, further improve pain control, and they themselves alone can also be used in certain conditions for pain relief. For example, tricyclic antidepressants are used for post-herpetic neuralgia in neurological condition. They can be added into the pain management plan at any step in the WHO ladder. It may be added, it may be spared. If the clinician feels that this may help in the analgesia, pain relief, then it may be added. Then adjuvants for neuropathic pain. When pain is neuropathic, there is good evidence for treating with adjuvant medication rapidly. But still always remember that only drug treatment in neuropathic pain never will help. You have to use some other adjuvant therapy like physiotherapy, radiotherapy, chemotherapy, surgery. These all help in treating the neuropathic pain in addition to the conventional drug treatment. Even if the pain is not a neuropathic pain, visceral pain or some other pain, the patient is having like backache he is having, or he is having some bone pain or something. So we can go for other types of treatment also to get pain relief, and only one sticking to single one treatment might not help. A multidisciplinary approach including some other 2-3 treatment parts will help better in the pain management of the patient. An adequate trial of 2 to 4 weeks at full dosage should be tried for each drug to check the efficacy of the drug. Then me being physiotherapist, so I'll discuss a bit physiotherapy part of the pain management also. So you people might have an overview at least of the physiotherapy treatment for pain management. Physiotherapy has come up in the last 10 to 15 years, very good for the pain relief in addition to the drug therapy and in prevention to the surgeries for pain relief. Physiotherapy is a very effective treatment procedure, and we use heat modalities, we use cold modalities, and we use electrical apparatus, and we use the exercise therapy to get pain relief through physiotherapy. Thermotherapy, first is thermotherapy, that is the heating modalities. We use short waves, we use microwaves, and we use moist hot packs for the pain relief in the patients. Then we use electric current, that is transcutaneous electrical nerve stimulation for the pain relief. Then we use ultrasonic waves also. One is the diagnostic ultrasound, which is separate. For pain relief, we have the therapeutic ultrasound, that is ultrasonic massage. And if this ultrasonic massage is done with analgesics like Volini or something like that, then it is termed as phonophoresis, and it works wonderful in the patients with soft tissue injuries. Then we can have biofeedback, that is the electromyography machines
through which we can get pain relief in the patients, and we can give spinal cord stimulation in the patients for pain relief in the terminally ill patients or the patients having cancer. The pain is intractable, then spinal cord stimulation is very effective in those patients. Then we can give therapeutic exercises. There is a large, vast bunch of exercises which can be prescribed according to the condition of the patient, according to the disease he is suffering from, according to the severity of the pain the patient is suffering. There is a vast variety of group of exercises which can be prescribed to the patient, and in adjunct with the drug therapy, it works wonders. In addition to the drug therapy or without also, we can prescribe. If we think so, okay, drugs are not required in such a case, then we can go for exercises only. We can give stretching exercises to the patient, strengthening exercises to the patient. Then we can give prescribe a proper patient tailored aerobic exercise program as per his aerobic capacity, as per his strength. We can make a specific exercise program for cardiovascular conditioning consisting of land-based or water-based exercises with light to moderate intensity exercises, which can be given 2 to 3 times per week for at least 4 weeks. Then we can give manual therapy. It is a very vast subject in which we can give myofascial release, soft tissue mobilization is there, massage is there. These techniques are very effective in pain relief. Then if we talk about the aquatherapy, hydrotherapy, it is performed in properly in the swimming pool, or the hydrotherapy pool is there, in which proper indoor pool is there, temperature control is there, equipments are placed inside the pool for exercise of the patient, and whirlpool bath, a specific tub is there in which the water is placed and it is moved in certain positions which either help in movement or they resist movement as per the desired effect we are looking for pain relief. Then there are many relaxation therapy techniques which can be applied for the patient. Relaxation therapy helps in the patient with psychological effects also, and with the pain relief also. In relaxation therapy, patient can go for visual imagery, progressive muscle relaxation, controlled breathing, or listening to relaxation tapes, Tai Chi techniques, or Vipassana techniques. We have so many of relaxation techniques. Then we can, the patient can go to psychiatrist or the psychologist for the cognitive behavioral therapy for pain relief. The main aim of CBT is to identify and correct the negative thoughts of the patient which have become automatic because of the repetition. Then other modalities which we can use for achieving relief of pain: nerve block, that is the surgical procedures, epidural blocks, and ablative neurosurgical procedures, which are all the indoor procedures which are effective in pain management. And these are thought even only in the last stages of cancer, or the pain is excruciating and not being treated by any of the conventional methods. Then weight reduction, diet modification of the patient, counseling of the patient, and removal of the smoking or smoking cessation, because nicotine induced pain relief is very short term, and it is over time smoking actually worsens the pain of the patient because it impairs the delivery of oxygen rich blood to the bones and the tissues of the body. Now, this was all about the pain management and what we can do if we are around a patient who is suffering from pain. Like, apart from drugs, apart from the physiotherapy or psychotherapy or CBT or any therapy, what else can we do to manage the pain of the patient? We can show that we care. We can talk to the patient, not around the patient.
Understand that pain management is a team approach, not a single led person. If I being a physiotherapist, you being a pharmacist, you think I know the best and I will only, my treatment will help and only this thing is required, and I am not discussing this thing with the team which is treating the patient, then it surely won't help. Communicate with the team, let others know what works. Use relaxation methods to decrease anxiety and muscle tension in the patient. Each patient must receive the necessary care and services to attain or maintain the highest practicable physical, mental, and psychosocial well-being in accordance with the comprehensive assessment and the plan of care. Assessment, reassessment, then tailoring the treatment plan is the key to achieve pain relief for the patient. Thank you. Over to the speakers. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, are there any questions from the audience? Yes, Navdeep Singh has raised his hand. Navdeep, please. How do we self-clarify that there is need to uh, show our case to clinician if we are experiencing physical form of pain? Because that there may be time when that pain increase and decrease at a very short form of time we can experience, but it undercomes in Okay, normal Navdeep, condition. I got your point, what you're trying to say. You're trying to say, like, today I am having excruciating pain in some region, like I am having pain in thumb. And tomorrow I go to the clinician, I am not having that much pain. That is, I think you are asking. So if the patient is having pain, and that is what the assessment part is. When the patient is having pain, he goes to the clinician. The clinician will do the proper assessment of the patient, underlying causes, specific disease, is any specific condition is there. If I am saying कि मेरे को thumb में excruciating pain रात को था लेकिन सुबह उतना नहीं है, तो proper assessment is the key. The clinician will ask, oh, do you use the phone, do you अंगूठे से बहुत काम करते हो, if she is a housewife, क्या बहुत कपड़े नहीं छोड़ते हो या ऐसी कोई एक्टिविटी करते हो which involves this movement. Are you getting my point? So proper assessment is the key. It might not, patient might not have that much of pain when he goes to the clinician, but he can verbally tell his symptoms to the therapist or to the clinician or to the team, and then with proper assessment we can reach to the root cause of the problem, and then we can prepare a good treatment plan for the patient, which drugs are required or which therapy is required. Okay, any other question, please? So, thank you so much, Savita ma'am, for your lecture. You touched each and every corner about pain. That first of all, we have to be clear about what is pain, what is the different classification of pain. And initially in your lecture, ma'am, you discussed about various types of pain, including acute, chronic, somatic, visceral, bone, and neuropathic forms of pain. Then after this, you discussed about the various categories of pain. It may be nociceptive or it may be neuropathic, because many of us do not know actually the difference between we actually do not know about what pain actually is. Then, ma'am, you discussed about the effects of pain. They may be either sympathetic or parasympathetic, and how they can be dealt with. You very well explained about the pain cycle.
that diagram was too good that after the onset of pain, what sort of changes can happen and how we can correlate those things. Then, ma'am, you discussed in detail about the pain assessment, like what are the different modes, be it the numeric rating of the scale or the body chart, or you discussed about the McGill pain questionnaire, that how can we actually assess the pain. After that, ma'am, you discussed about the pain management, and in that you discussed about what is the goal of pain management therapy, or in that you discussed in details about the how we want to decrease the pain or decrease healthcare utilization, improve functional status, or return to the employment, or decrease shopping for care, like all these things that we have to take into consideration. Ma'am, you discussed that there has to be a multidisciplinary approach as far as the pain management is concerned, and you discussed about the role of physician, physiotherapy, pharmacotherapy, psychotherapy, surgery, yoga, and many other therapies which may include like dry needling or acupuncture. Then four main parameters as far as the pain management are concerned. Like we can go for there may be some medicines or the physical therapy or lifestyle modification or the nerve blocks if they are or they have to be dealt with. After that, ma'am, you discussed about the treatment of the pain, like what sort of drugs can be used, the lowest effect dose by the simplest route, or what we can go. We can start with the simplest single agent and maximize its potential before adding other drugs, or use the WHO's stepwise, WHO's stepwise approach, like they are also called as the WHO analgesic ladder. Or we do not stop pain medication in terminal patients or change the route if needed. You very well explained about the ladder that I have not gone through before, like how we can go for from the mild pain, you can go for the non-opioid or with the adjuvant therapy, which may be or may not be there. Then coming to the mild to moderate pain, what we can do is weak opioids plus minus non-opioid or adjuvant therapy may be attached with. And the third one is the third step, the higher point is the moderate to severe pain, where we can go for the strong opioids or along with the non-opioids and adjuvant therapy, which may be depending upon the condition of the patient and depending upon the doctor. Then therapeutic exercises. These are the hot topics these days, that therapeutic exercises, stretching exercise, strengthening or aerobic exercise programs, or the manual therapies which can be taken care of. Then, ma'am, you discussed about the aqua therapy, like hydrotherapy, whirlpool bath, relaxation therapy, cognitive behavioral therapy, that is CBT. And some other modalities may be present, like nerve blocks or epidural blocks or ablative neurosurgical procedures, weight reduction, diet modification, counseling. Patient counseling is very important, and the smoking cessation has to be there, because sometimes the smokers feel that cigarette ही हर चीज की दवा है. So temporarily they may have a relief from the pain, but in the long run it can further worsen the problem. Or what everyone can do to manage the pain, like these are very important points that you have taken care of, that we should tell the patient, or we should make him or her believe that we actually care for him or her. We have to talk to the patient, not around the patient. Understand that the pain management is a team approach, and communicate with the team, or maybe some suggestions may be given by some other team members, and some relaxation methods can be taken care of, and along with the muscle tension. And each patient must receive the necessary care, or he should not feel that he is abandoned, or मेरे को ही सिर्फ दर्द हो रहा है और तो किसी को कोई मतलब नहीं है. And really, ma'am, it was a wonderful lecture, and I hope that most of the students they must have taken benefit from today's talk. Thank you so much. Thanks a lot, ma'am, for being here with us today.
Yeah, Rosal wants to ask some question. Rosal, he has raised his hand. Rosal, are you there? I think it will be by mistake. I hand over the mic to Miss Monika. Yeah, Miss Monika, are you there? Monika, ma'am, are you there? Yes, ma'am. Yes. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your valuable insights on the topic pain management. We hereby present a digital copy of certificate to Dr. Savita. Ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. I'm really indebted. I feel very elated. I was initially I was a bit apprehensive that all are pharma students, but it went very well, and I tried to cover each and every part and tried to touch pharmacotherapy as well as my specialization also. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, it's actually our privilege to have you with us today, and thank you so much for your time today. Dr. G.D. Gupta is also with us today. Good afternoon, sir. Am I audible? Yes, madam. Okay, Miss Monika, now I hand over this mic to you, and please proceed further for the next speaker. Yeah. Thank you, ma'am. Once again, I welcome Dr. G.D. Gupta, sir. Welcome, sir. And now it's time to start our next session, delivered by Dr. G.D. Gupta, sir. First of all, I would like to introduce our speaker, Professor G.D. Gupta, sir. And it's my privilege to introduce Dr. G.D. Gupta, sir. No wonder he was called Tiger of Pharmaceutical Education and Administration by none other than Professor N. Udappa in recently concluded event Client Pharma Conclave 2021. Professor Dr. G.D. Gupta is currently working as Director-cum-Principal ISF College of Pharmacy and Autonomous College Moga and NAC accredited A-grade college. He did his pharmaceutical education both B.Pharm and M.Pharm from Dr. H.S. Bodh Vishwavidyalaya, Central University, MP and PhD from Department of Pharmaceutical Sciences, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore. Recently, Dr. Gupta and his team achieved India Book of Records, teaching marathon relay 101 hours. Dr. Gupta nominated fourth-time Chairman, Board of Studies, IK Gujarat PTU, Jalandhar. He has contributed more than 2 decades of dedicated service towards pharmaceutical education and research. Professor Gupta is a prolific writer of professional books and authored 23 books, published research papers, 125 publications in various reputed peer-reviewed journals, and encompassing 42 review articles. Besides, he has been instrumental in getting 5 design patents and 6 field patents. He received grants from DST, DBT, and AICTE under various projects. He has guided 17 doctoral and 98 postgraduate research project students. His prime areas of expertise and interest have been pharmaceutics, conventional, and novel drug delivery system. He has widely traveled and shared his experience through more than 75 invited talks
at prestigious firms in India and abroad. Dr. Gupta and his research team have also presented more than 125 papers in various conferences in India and abroad. Many papers have been awarded with Best Paper Award. He is member of editorial board and advisory committee of various national and international journal repute. His contribution have fetched him several national and international awards: Education Excellence Awards, Best Poster Paper Award, Man of the Year 2000 from American Biographical Institute, USA, Best Director Award by Society of Pharmaceutical Education and Research awarded as Principal of Year Award 2016, Best Director Award by EET CRS and 5th Faculty Branding Award 2017, Eminent Scientist Award by Nirali Prakashan 2019, Atal Samrastha Award by India Society of International Auditoria, Nepal on December 25th, 2019, Spur Fellowship Award by Spur during Spur 9th Annual Conference and Exhibition held at EKS University, Satna 2020, received National Award as Eminent Academic Leader 2020 by International Institute of Organization Research and also received many national awards. National Adroit Innovative Educator Award 2021 by Green Thinkers India, Fellow Member Award by International Institute of Organized Research, February 2021, and International Adroit Principal Award 2021, Green Thinkers India. Received A.N. Mishra Memorial Best Scientist Award in 2021 during National Pharma Meet 2021, organized by Nirali Prakashan, Delhi. He is Chairman, Board of Studies, Pharmacy, IIT Gujarat, PTU Jalandhar, Chairman, Skill Vigyan Program of Student Training Program of Punjab State Council for Science and Technology, Chandigarh, ex-President, Society of Pharmaceutical Education and Research, Member Secretary, Research Advisory Council of ISF College of Pharmacy, Moga, Chairman, IAEC, ISF College of Pharmacy, Academic Council, Member, Board of Studies, Clinical Research and MLS, Executive Member of APTI Central Body, Executive Member, IPA Punjab Branch, Chief Advisor, Cell C Human Rights Manch, Punjab President, Alcohol Free Society. Dr. Gupta is a life member of various professional studies. During lockdown, Dr. Gupta organized first 6 days online STTP sponsored by AICTE, invented wearable infection protection ring and field design, delivered many lectures and motivational speech on COVID-19 available on YouTube. Dr. Gupta is a very live and dynamic academician and administrator. Besides academics and research, Professor Gupta is motivational speaker and social worker. He is a good human being and friendly. I think it's my privilege to introduce Dr. G.D. Gupta. Sir, thank you, sir. Without wasting time, I invite... Thank you very much, Monika ji. Thank you very much, Monika ji. So this is the very lengthy, you have given so many things. So thank you for a very nice introduction. But I always like the last line, good human being. Because I feel that if everybody follow only this one, if you work on the like a good human being, it will be the, you can achieve each and everything. So first of all, I am thankful to the organizing committee, Dr. Viney Chawla ji, Dr. R.K. Narang ji, Dr. Pooja Chawla and itself Monika ji for inviting me on this platform and provide the opportunity to interact with all of you. So first speaker was Dr. Savita ji. So he is taken so many things which is related to the pain.
and very, very important of the life. So before to start our presentation or for the discussion, we can interact to each other, because this is the purpose of this session, stress management. So I will come with some of the question and some of the discussion with all of you, so that we come out how much we are the taking this types of the topic useful, or it is the important for life or not. So first, some of the data, if you can come out from the Google and so many things, near about the 1 to 1.5 crores of the person in India, they are suffer with the problem of the mental health, and near about 25 to 27% people, they are suffering from the stress level. Nowadays, this scale is the gradually increasing. So if you can some of the newspaper cutting or some of the news headlines, in including of the education, including of the research, including of the some of the peoples, those are living things, or you can say they are in a very, very good position, but they are also have so many problem of the mental. So before to go the detail, I will go some with of the question. तो जो मेरा पहला question है, this is the very, very simple. Are you feeling stress somewhere in your life? क्या आपने अपने जीवन में स्ट्रेस फेस किया है? सो इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में, वी एज एंड व्हेन यू आर द कंफर्टेबल, बिकॉज द सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग इज द डायलॉग. स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, इट इज नॉट अ डिजीज, बट इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस वन, obviously it will convert in the form of the disease. For this purpose we need a medicine, for this purpose we need a consultancy, for this purpose we need a so many other things. तो मैं एक एक से कुछ बातचीत कर लेते हैं, so that we can discuss है कि कभी आपने अपने जीवन में क्या स्ट्रेस फील किया है. राहुल गर्ग जी, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जिनको हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? राहुल जी, एक रिक्वेस्ट है, सब लोग अगर अपनी स्क्रीन ऑन कर लें तो आप एंजॉय ज्यादा कर पाएंगे, एंड यू कैन कम टू. और वास्तविक अगर हम स्ट्रेस को फ्री करना चाहते हैं तो वो हम इजीली कर सकते हैं. अदरवाइज क्या है, ईच एंड एवरी थिंग इज द गिवन. और जो गिवन चीजें, मैं एक सिंपल सी आपको बात कहता हूँ, व्हाई द बुक ऑफ द लाइब्रेरी इज इम्पोर्टेंट टू मी. चलिए मोनिका जी, आपको बताएं, 2 किताबें हैं, एक आपके पास पर्सनल बुक है और एक आप लाइब्रेरी से इश्यू कराते हैं. सेम बुक, सेम टाइटल, सेम ईयर, एवरीथिंग. विच बुक इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड भाई? जो आपका दिल करता है वो बताइए. पर्सनल. एक आपके पास पर्सनल है और एक आपके पास लाइब्रेरी की बुक है. विच बुक इज द मोर इम्पोर्टेंट टू यू? पर्सनल बुक. पर्सनल बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है. और हरमन जी, हरमन मीत हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? नेहा शर्मा, तो आप अनम्यूट करें. या बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो जिन्होंने सिर्फ अपना कंप्यूटर ऑन किया हो और अवेलेबल ही ना हो, तो जो भी हम नाम लें, इट इज बेटर कि आप कंट्रीब्यूट करें. तो जैसे मोनिका जी ने कहा है, तो इससे मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ. इसलिए सहमत नहीं हूँ कि जब कोई चीज हमारे पास एक शॉर्ट गेन के लिए आती, शॉर्ट गेन इन दी सेंस कि लाइब्रेरी बुक फॉर द 15 डेज, तो हम उसका 200% यूज करते हैं. और हमारी किताबें तो कभी भी पढ़ लेंगे, और कभी के चक्कर में 2 महीने तक उसकी धूल भी साफ नहीं होती. आई एम राइट मोनिका जी और रॉन्ग? दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग. दैट इज व्हाई कि स्ट्रेस लेवल को हाउ टू मैनेज and how to work on it. तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, आर यू फीलिंग स्ट्रेस समवेयर इन योर लाइफ? विनय, डॉक्टर विनय जी, आपका क्या कहना है? Sir, everybody is feeling stressed at one point or the other. Like these days, after the date sheet has been issued by the university, students are stressed about the exams. तो अगर मैं ये कहूँ, मैंने ऐसे व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा है कि 24 घंटे के अंदर हर रोज, मैं महीने दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हर रोज एक पॉइंट ऐसा आता है जहां वी फील द स्ट्रेस. आगे उस स्ट्रेस का लेवल अलग अलग होगा, बट एवरी डे मोस्ट प्रॉब्ली
लेट अस कंसीडर आप एक बस को पकड़ना चाहते हैं बस स्टॉपेज से, आप 5 मिनट लेट हो गए, आपको कोई छोड़ने जा रहा है जो कार से उस बस को पिकअप करवाना चाहता है। आप देखिए जो चला रहा है वो स्ट्रेस ले रहा है ट्रैफिक की, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, रिस्क ले रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, और जो बैठा हुआ है वो कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ उसके दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है। इफ वी आर अनेबल टू रीच देयर इन टाइम और बस छूट जाएगी तो जिस ड्यूटी पर हमें जाना है वहां पर हम नहीं पहुंच सकते हैं, और नहीं पहुंचने पर आधी छुट्टी कट जाएगी। जो हमारा बॉस है वो बहुत सारी चीजों को सुनाना चालू कर देगा, यानी कि एक हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होना तय है। इट मीन्स एवरी डे एवरीबडी हैव सम ऑफ द स्ट्रेस, चाहे वो नोइंगली हो चाहे अननोइंगली हो, but some of the stress it can be null and void and neutralized immediately, so we can't say this is under the category of this one. Now another question is my this one, what are you feeling during the stress? Stress जब होता है तो हमारे अंदर फीलिंग्स क्या आती हैं, हमारे अंदर विचार क्या आते हैं, what we are the thinking, हम क्या करना चाहते हैं। ऐसा इसमें कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो अमित कुशवाहा जी, अच्छा कोई मैं चाहता हूं सो दैट वी कैन इन्वॉल्व की जब स्ट्रेस होता है, मैंने ये तय कर दिया कि हर व्यक्ति को स्ट्रेस, हम लोग 18, 20, 25 साल के हो गए, स्ट्रेस होना तय होता है, दिस इज श्योर। तो उस स्ट्रेस में हम क्या करते हैं? डॉक्टर पूजा जी आप कुछ कहना चाहते? सर वेरी करेक्टली सेड कि कहीं ना कहीं तो स्ट्रेस में रहते ही हैं। सुबह के टाइम पे तो ये स्ट्रेस बिल्कुल चरम सीमा पे होता है अपनी की फटाफट से टाइमली मैनेज करना है, शाम को वो स्ट्रेस हो ना हो, लेकिन सुबह तो रहता ही रहता है। बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री विद यू सर। मैं ये जानना चाहता था ड्यूरिंग द स्ट्रेस आपके अंदर क्या क्या होता है, व्हाट आर यू फीलिंग, क्या फील करते हैं? सर एक डर रहता है उस टाइम पर कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर लेट हो गए तो क्या होगा। मतलब हम ये नहीं सोचते कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, बट उस टाइम पे वो बिल्कुल प्रेशर कुकर बना होता है उस टाइम पे। चाहे वो एग्जाम्स के ही हम एग्जांपल ले लें सर, एग्जाम के टाइम पे भी लेट डर रहता है, खास तौर पे जिस टाइम पे वो क्वेश्चन पेपर हाथ में आ रहा है। जैसे डॉक्टर चावला ने बोला कि डेट शीट अनाउंस हुई है, आपने जो क्वेश्चन कहा कि स्ट्रेस होता है, एक फियर पैदा हो जाता है, तो इसी से जुड़ा है एक्चुअली हम अब फैमिली स्ट्रेस की बात करते हैं। तो ड्यूरिंग द स्ट्रेस आइदर फादर मदर किड्स, father-in-law, mother-in-law, or you can consider any types of the relation. यदि एक व्यक्ति को स्ट्रेस हुआ है तो उसके स्ट्रेस से दूसरे व्यक्ति इफेक्टेड होते हैं या नहीं होते? दिस इज द अनदर क्वेश्चन। स्ट्रेस एक व्यक्ति को है घर में किसी कारण, जैसे आपको मान लीजिए जल्दी जाने का स्ट्रेस हुआ और आप तेजी से काम कर रहे हैं, तो जो मेरी अपनी फीलिंग है या जो मैंने देखा है कि मोस्ट प्रॉब्ली फियर के साथ साथ हमारा ब्रेन की गति तेज होती है, और उस कंडीशन में जो हमारी डिसीजन लेने की पावर होती है वो बहुत पुअर फॉर्म में हो जाती है, और हमारे अंदर एंजाइटी के साथ एक एंगर पैदा होता है। अब आप देख लीजिए, एक स्ट्रेस से प्रेशर ने जन्म लिया, एंजाइटी ने जन्म लिया, एंगर ने जन्म लिया, एंड समटाइम आई आल्सो डिमेज्ड ऑफ दी समथिंग कि अरे ये क्या आ गया, इसको हटाओ। तो समटाइम वी कैन आल्सो डैमेज दी सो मेनी थिंग्स, चाहे वो फिजिकल आर्टिकल हो, आपके अंदर एक रिमोट लिए हैं, आपने रिमोट को ही फेंक दिया, इत्तेफाक था फेंक पलंग पर रहे थे, वो नीचे चला गया, और नीचे जाने के बाद रिमोट टूट गया, फिर सोचते चलो आज 150 रुपए का नुकसान हुआ, 200 का नुकसान। ये सारे जो कंडीशन होती हैं, दिस इज द अंडर कंसिडरेशन ऑफ द स्ट्रेस फॉर्म। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को उसका जवाब देना है। This is the stress is generated by the other person or stress is generated by the self. दो मैंने अलग अलग बात कही है, और परसेंट किसका ज्यादा है? स्ट्रेस इज जनरेटेड by the other person or stress is generated by the self. Which percent is more in your life or anybody life? What you have feel during your experience and during your life, or either during the as a student, as a teacher, as a parents. So you can include the things which are very very important कि जो स्ट्रेस है जो दूसरों के द्वारा दिया जाता है या स्वयं के द्वारा जो स्ट्रेस पैदा होता है, किसका रेशियो ज्यादा है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
So if anybody want to, Dr. Rakesh जी भी हमारे साथ में है. So I want to also involve Dr. Rakesh जी. Dr. Rakesh जी, आपको क्या लगता है? Good afternoon. Sir, video on जी सर, गुड आफ्टरनून सर. possible हो कर तो. लिए मैम. Okay, जी जी. कर लिए मैम. Stress in Yes, term yes, of you have asked whether it is personal or by somebody. हाँ, जो In my सेल्फ point जनरेट of view, होता है या दूसरों के द्वारा हमें ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है? in my point of view, it can be both. It depends on the situation. रेशियो किसका ज्यादा है? Ratio, sir, as individual I will tell or as a whole. Yes, yes, भाई नोट आप अपना बताइए. देखिए कोई डुप्लीकेसी नहीं चाहिए. There is the no need As duplication. an individual, I can see in my life stress is coming from my side itself, sir, not from other. Excellent. And whatever comes from my side, sometimes that stress is beneficial also. Like one example I will add. For example, if we want to go tomorrow to Chandigarh, for example, we have the visit at Chandigarh. So I'll keep the alarm at, for example, 4 o'clock. So in between, if I take the step, so in between I will wake up at 3 o'clock and I'll see whether it is 4 or 3. So sometimes these stress are very beneficial also. Sometimes this the person's life is getting back also. So Very good. मैं स्ट्रेस को सर ऐसे देखता हूँ कि in some extent it is beneficial, in some extent it is not beneficial to the system also. So one पॉजिटिव example नेगेटिव दोनों स्ट्रेस हो सकते हैं. स्ट्रेस में भी पॉजिटिव एंड स्ट्रेस में भी नेगेटिव आल्सो. सो वेरी ट्रू आंसर. और एक इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मोर सीरियस. अगर ये मान के चलेंगे दोनों स्ट्रेस हो रहे हैं, अभी मैं परसेंट की मैं बाद में बात करता हूँ, डेटा के साथ बात करूंगा, कि जो सीरियसनेस है जो हमारे द्वारा जो सेल्फ जनरेट होता है स्ट्रेस हो या दूसरे के द्वारा दिया जाता है पेनफुल. सबसे आज डॉक्टर सविता जी ने पेन की बात की है, तो जो पेन सविता जी ने बताया है जो हमारी पूरी लाइफ के अंदर ड्यू टू द डिजीज एंड ड्यू टू द सम ऑफ द एनाटॉमी फिजियोलॉजी सो मेनी टाइप्स ऑफ द पेन. लेकिन स्ट्रेस का भी एक बहुत बड़ा पेन होता है और इस पेन में कोई भी मशीन काम नहीं करती है कि इट विल द फाइंड आउट व्हाट टाइप्स ऑफ द पेन. आज आप देखें स्ट्रेस लेवल को मेजर करने की कोई भी मशीन नहीं है कि आपको 10% स्ट्रेस है. मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर हो आई डोंट नो कि दिस देयर इज द नो एनी यू कैन से इक्विपमेंट व्हिच कैन बी मेजर द लेवल ऑफ द स्ट्रेस. इनडायरेक्टली हम जो है रिसेप्टरों की बात कर लें, बॉडी लैंग्वेज की बात कर लें, क्वेश्चन आंसर करके मेडिसिन पर पेशेंट को ले जाएं, बंदे को ले जाएं, दिस इज द डिफरेंट थिंग. बट एग्जैक्ट जैसे बीपी की मशीन है बीपी चेक कर लिया, शुगर की मशीन है शुगर चेक कर लिया, बट स्ट्रेस लेवल को एक मेजर करने की कि एट व्हाट लेवल इट विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ द एक्सीडेंटल कंडीशन. सो जो डॉक्टर राकेश जी ने कहा कि सेल्फ जनरेटेड, तो एक आपको इसके साथ और क्वेश्चन हम पुट अप करना चाहते हैं और एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो लोग पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करते हैं वो ज्यादा तरक्की करते हैं या जो लोग कम टाइम ज्यादा मेहनत करते हैं वो तरक्की करते हैं? राकेश जी ये आपसे ही क्वेश्चन है. हाँ जी सर. सर जो लोग, आप प्लीज रिपीट. यस 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 प्लीज. या प्लीज रिपीट सर क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है जो लोग जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वो तरक्की करते हैं या जो लोग कम मेहनत करते कम समय में ज्यादा मेहनत करते हैं वो तरक्की करते हैं? सर जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं वो तरक्की हमेशा ज्यादा करते हैं. जो ज्यादा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दैट इज वी कैन से दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन माय पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे हम सारी लाइफ काम करते हैं तो वो बेटर है. ऐसे नहीं ना कि मैंने 4 साल काम किया, दैट्स ऑल, आफ्टर दैट आई विल नॉट डू द वर्क. So in my point of view, in my opinion, that hard work should be continuous, and these things, I think, the person's stress level also we can manage. डॉक्टर पूजा जी क्या कहना चाहते हैं? ये सेम क्वेश्चन है जो राकेश जी से पूछा था. सर मेरे ख्याल से तो लगातार मेहनत करने से, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा ये कहा है
कि जो टीचर यहाँ बैठे हुए हैं, रिसर्चर यहाँ बैठे हुए हैं, हो जी, सकता है स्टूडेंट्स भी हों, ऑल कैटेगरीज आर देयर। आपको ये बताएं, एक वर्ड यूज करते हैं, वी आर इन द स्पेशली इन द फार्मा, राइट टाइम पर राइट क्लिक होता है, राइट रूट, राइट डोज, राइट एडमिनिस्ट्रेशन, तो बीमारी का ठीक होना जल्दी और तय है। राइट टाइम पर राइट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट डोज में अगर मेडिसिन को दिया जाए तो इट इज द मोर इफेक्टिव। तो मैं अपने बच्चों को कई बार एक लेक्चर या मोटिवेशनल में डिस्कशन करता हूं कि दोज पर्सन हु आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क एट राइट टाइम, लेट अस कंसीडर इफ आई एम द बी फार्म, और हमने सोचा अरे यार बाद में कर लेंगे, और वो 4 साल में इफ आई हैव नॉट टेकन केयर, तो हम आप ये मान के चलिए पूरी जिंदगी भर हमें कई गुना मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम ऑल्सो गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द टीचर, दो टीचर फील दैट कि आज ही तो पढ़ाना है तो ये लेक्चर हो जाएगा और हमने 1-1.5 घंटे पढ़ाया एंड फिनिश कर दिया, एंड सम ऑफ द टीचर दे आर टेकिंग द पेन, और वो एक बार पेन ठीक से ले लेते हैं तो पूरी लाइफ के लिए उनका जो टॉपिक होता है, टाइटल होता है, सब्जेक्ट होता है, इट विल बी द वंडरफुल। मैंने एडिशनल वैल्यू की बात नहीं की, नॉलेज एडिशन और हार्ड वर्क, यानी कि जो कहने का मतलब है कि राइट टाइम पर राइट तरीके से मेहनत की जाए तो उनकी सफलता भी 80% है। और जो लोग हैं जो जीवन भर मेहनत करते हैं और करते ही रहते हैं क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पर मेहनत नहीं की है, एक व्यक्ति की मान लीजिए एम फार्म 2nd डिवीजन हो जाए, उसकी जिंदगी निकल जाएगी, कभी प्रोफेसर नहीं बन सकता है। लेकिन यस, अगर वो मेहनत करेगा तो कहीं ना कहीं किनारे लगता रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब उसको ये समझ में आ जाएगा कि आई वॉज अनेबल टू डू द वर्क बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और ऐसे लोग सिर्फ 20% है, यानी कि 80% ऐसे लोग हैं जो जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं लेकिन उनको इतना गेन नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। द रीजन बिहाइंड दिस वन कि राइट टाइम पर राइट क्लिक नहीं किया गया है। सो दिस इज द सेम थिंग ओवर हियर कि 80% ऑफ द स्ट्रेस जनरेटेड बाय द इंडिविजुअल and only the 20% stress given by the surrounding, either your subordinate, either your officers, either your family, either your society, or so many things you can include. But if you feel that reduce these types of the stress, it will be the very easy manner. और जो स्वयं से स्ट्रेस पैदा किया जाता है, तो एक कहानी कही जाती है कि आप स्वयं से अंतर्द्वंद कर रहे हो, और जो व्यक्ति स्वयं से अंतर्द्वंद करता रहता है वो साइलेंस मोड की तरफ चला जाता है एंड अनेबल टू द डिस्कस। अगर आपके पास, आपको सिंपल एग्जांपल दें, अगर आपके पास कोई फैमिली की प्रॉब्लम है, कितने लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं? नहीं करते हैं, वो अपने अंदर दिल में उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। लेकिन अगर आपके एक डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करके और अपने आप को आधा स्ट्रेस फ्री कर लेते हैं। So those stress which is generated by the self inside the peoples, it will be the more dangerous and difficult, because sometimes you have fixed your target, sometimes fixed your value कि आज मैंने सोचा कि मैंने एप्लीकेशन दी है, मुझे इस बार प्रोफेसर बन जाना चाहिए, ये आपने डिसाइड कर लिया। एनीवे, एनी रीजन अगर वो नहीं हो पाता है तो वो स्ट्रेस एक पेनफुल जो हो जाता है, इट इज द मोर डेंजरस एज कंपेयर टू दिस वन कि आपने फील किया आई हैव पुट द एप्लीकेशन, व्हाट हैपेंड, इफ आई हैव द कैपेबल और एलिजिबिलिटी हो जाएगी, आई विल डू इट। फिर एक क्वेश्चन एक आता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति का होना और पर्टिकुलर का नहीं होना। चूंकि वी आर द एसोसिएटेड विद द फार्मा प्रोफेशन, दैट इज व्हाई आई वांट टू टेक दिस टाइप्स ऑफ द एग्जांपल। दैनिक भास्कर में पंजाबी यूनिवर्सिटी की एक खबर आई थी कि 80% ऑफ द टीचर अंडर द स्ट्रेस कंडीशन, और उसमें पॉइंट लिखे हुए थे। उस पॉइंट में सबसे बड़ा पॉइंट लिखा था, वो था वेरी वेरी सिंपल कि सीनियरिटी का, यानी कि प्रमोशन का। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ था पब्लिकेशंस का, कि जितना एक स्ट्रेस पैदा हो रहा है रिसर्च का, वर्क का और प्रमोशंस का और पोजीशंस का, इट इज क्रिएटिंग रेगुलरली। सो एक एड मैंने जो पढ़ा था, आर्टिकल मैंने पढ़ा था,
This is very, 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 very important. So we are the educationists, so we need to think over it, how we can reduce or how we can finish the stress in our life. So in my knowledge and in my definition, stress equal to pressure, and if pressure is greater than stress resources, then it is converted in the stress. मैं फिर से repeat करता हूँ, stress is equal to the pressure greater than the resources, then it will convert in the stress. Otherwise it can become in the form of the slight pressure, and this pressure it will be, जैसा राकेश जी ने कहा है कि positive and negative. If some pressure in your life, you will be grow. आप हमेशा ग्रो करोगे. मैंने कभी कहा या नहीं कहा, आई डोंट नो. आई वांट टू पुट ओवर हियर कि अगर आपके सराउंडिंग में आपका कोई क्रिटिक नहीं है, अगर आपके सराउंडिंग में आपकी गलतियां देखने वाला नहीं है, आप तरक्की कर ही नहीं सकते हो. और मैं तो कहता हूं कि वो भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके सराउंडिंग में क्रिटिक पर्सन रहते हैं, कमियां ढूंढते पर्सन रहते हैं. एंजॉय बहुत करते हैं हम तो. वी कैन एंजॉय दिस वन, क्योंकि वो कमी बताने के लिए बैठा है, सो दैट वी कैन ग्रो. लेकिन जिस दिन हम ये सोचने लगे अरे यार ये कमी क्यों बता रहा है, उस दिन हमारी 2 के बढ़ के 4 कमी हो जाएंगी. लेकिन आज तो हमारी 2 से कम होकर के 1 बची हुई है, क्योंकि 2 उसने गिना दी, मैंने उस पर होमवर्क कर लिया, एंड आई विल ग्रो इट. तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक व्यक्ति के पास सर्वश्रेष्ठ वो मित्र है जो आपकी कमी को ये बताता हो कि डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर राकेश या डॉक्टर पूजा, दिस इज नॉट सुटेबल टू यू. अरे यार क्या लिखते हो, कितनी गलतियां लिखी हैं, उसको टाइप करना नहीं आता, उसको एक लेटर ड्राफ्ट करना नहीं आता है. आपके पास इनडायरेक्टली भी खबर आ जाए तो जो ये कहे उसी को बिठाओ और उससे कहो जेंटलमैन इस लेटर को पढ़ लीजिए, वो कमियां निकाल के चला जाएगा, आप उनको ठीक कर लीजिए और एंजॉय करिए, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे. अगर आपने सोचा कि अगर ऐसा क्यों हो रहा है, then it is difficult. मैंने कहीं पढ़ा था जो सबसे ज्यादा अगेंस्ट आपका पर्सन हो उसको अपने बाजू में चेयर बिठाओ, रखो उसके पास में, क्योंकि जो पत्थर फेंकता है वो बगल में तो फेंक नहीं पाएगा, वो दूर फेंकता रहेगा तो दूसरे को फेंकता रहेगा, आप सेफ रहेंगे. ये हमारे गुरुजी ने मुझे कहा था, हमारे प्रोफेसर गौर सर ने कहा था कि दोज पर्सन हु इज द वेरी वेरी अगेंस्ट टू यू, उनको जितना पास बिठाओगे उतने ही कम पत्थर खाओगे और ग्रोथ करते चले जाओगे. सो दिस इज द मूल मंत्र, एंड यू विल बी आल्सो स्ट्रेस फ्री, और आपका जीवन प्यूरिफाई होता चला जाएगा, स्ट्रेस फ्री होता चला जाएगा और ग्रोथ होती रहेगी. तो जब जब मैंने आपको, चाहे मैं उदयपुर का बताऊं, व्हेन आई वाज द प्रिंसिपल इन द उदयपुर, तो हमारे चारों तरफ कम से कम 10 ऐसे लोग थे जो दिन भर गालियां देते थे, दिन भर पूरे समय समझ लीजिए, और गलतियां बताते थे. वो गलतियां बताते थे, हम उन्हें ठीक करते जाते थे, और हमने उनको ये कहा था जिस दिन हमारी गलतियां ज्यादा ठीक हो गई हम एक स्टेप और तरक्की कर जाएंगे. सो दिस इज द वेरी वेरी ट्रू मैनर. एक ये बात बहुत कम लोग बोलते हैं, जो लोग पॉलिश करने में लगे रहे, जो आपको ये सजेस्ट करने लगे रहे कि अरे यार दिस इज द नथिंग दैट्स ऑल, यू आर द वेरी जेंटलमैन, क्या पढ़ाते हो, क्या डिलीवर करते हो, समझ लीजिए आपसे कुछ ना कुछ नुकसान कराने वाला है, उससे चेतन रहिए. तो जैसे ही आप चेतन हो जाएंगे आप अपने आप को परफेक्ट, हमें पता है ना यार कि मैंने जो टाई पहनी वो किस कलर की, अब किस कलर की है, दूसरा कोई नया कलर बता रहा है तो मुझे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो उसने जो है जो दूसरा ग्लास लगाया होगा, इट मे बी पॉसिबल. सो दैट इज व्हाई आई वांट टू ओवर हियर कि जो स्ट्रेस है, जो इतनी जो हमने बातचीत की है, इसका मूल मंत्र सिर्फ इतना है कि जो हमारा स्ट्रेस है वो स्ट्रेस 80% हमारे द्वारा जन्म ले रहा है. इफ वी कैन टॉक अबाउट द फैमिलीज पीपल्स, आज परिवारों में जो स्ट्रेस है वो बाहर से नहीं आ रहा है, सेल्फ जनरेटेड स्ट्रेस आ रहा है. उस स्ट्रेस को हाउ टू रिड्यूस. जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं उन्हें बच्चों की चिंता है, स्ट्रेस खाया जा रहा है. जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं उनको अपने तरह का स्ट्रेस चल रहा है. पेरेंट्स को बच्चों के फ्यूचर का स्ट्रेस चल रहा है. आप ये बताइए मुझे, इफ यू कैन टेक सच टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस, व्हाट यू विल गेन, क्या गेन कर सकते हो. मैं ये दावा कर सकता हूं कि गेन तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो मिल सकता था उसको आप लॉस जरूर कर देंगे. सो डोंट डू दिस. सेकंड बात, ऑब्जर्वेशन में चलें और अपने सिस्टम के साथ आप होमवर्क करते चले जाएं.
then I feel that you will be the better and better format. अब मैं जल्दी से कुछ अपनी स्लाइडों को चला देता हूं so that we can come over here and we can take the minimum time. अदरवाइज तो टाइम बहुत लगता चला जाएगा, तो जल्दी जल्दी करेंगे हम, क्योंकि काफी हम लोगों ने बातचीत कर ली है. सो माय स्लाइड इज विजिबल मैडम? सो विजिबल मैडम? तो Yes, sir. ओके, सो थैंक यू. स्ट्रेस इन पर हम बातचीत कर चुके हैं, सबको मैं छोड़ देता हूँ. Stress ratio we have also discussed. So this is the international chart I have taken from some of the site near about. सर स्लाइड्स मूव नहीं कर रही आपकी, स्लाइड्स नीचे नीचे नहीं जा रही है. हाँ अब ठीक है, नाउ फाइन. यस ओके, यस सर. तो देयर इज द नियर अबाउट. अब इसको अगर उसमें करेंगे देन आई फील सम ऑफ द प्रॉब्लम. स्पेस दिखाई दे रहा ना बराबर? सर इट इज विजिबल, बिल्कुल ठीक है. जी जी सर, विजिबल. Okay, so this is near about the 27%. This is the stress level, mental health, and stress is more than this. So what is the stress? स्ट्रेस होता क्या है उसकी हमने बातचीत की, और यहाँ पर हमने एक बल्ब बनाया हुआ है. दिस इज द इंटेंशनली इसमें डाला है, जिसके चारों तरफ हमारे पास कितने. सो व्हाट इज स्ट्रेस? Stress is our body way of the responding to any kind of pressure of demand, because we have lot of demand in the nature, either related to the physical things of the related, money related, position related, result related. So many things we have to the in our life in the regular way. So stress is the body's automatic response to any physical or mental demand placed on it. So I have already mentioned that stress as an initial level, this is not a disease. ये बीमारी नहीं है. बार बार किसी को घर में कहो कि तुम लगता तनाव में रहते हो, कई बार मैंने देखा है पूरे समय तमन्नाओं में रहते हो, तो अगर उसको बीमारी नहीं है तो बीमारी हो जाएगी. डोंट डू दिस वन. हाउ वी कैन रिमूव, इसकी हम बातचीत करेंगे. ये जो है आपका स्ट्रेस इज द वियर एंड टियर आवर माइंड एंड बॉडीज एक्सपीरियंस एज वी अटेम्प्ट टू कोप विद आवर continually changing the environment. So we can say that, इसको मैं छोड़ देता हूं. और स्ट्रेस जो अभी डॉक्टर राकेश जी ने कहा था, we all stress is bad, there is the no, all stress is not bad. Not all stress is bad. It depends on the situation and how it is handled. So if you have some of the slight stress, and due to the stress if you can achieve the goal. ये देखिए मैंने दो फोटो लगाई है, गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस. दोनों लोगों को ऑफिस का एक टास्क मिला हुआ है. बोथ आर अंडर द स्ट्रेस कंडीशन. one person they have the completed the job role, so you can enjoy and wow factor. Another person is the unable to the complete, then it can be generated the inside of the stress. So at this types of the stress, if you have required to discuss your friends, you are required to discuss your itself to the boss or near and dear friend, so that they can be help you. Stress is the two types, positive stress and negative stress. A form of stress having a beneficial effect on health, motivation, performance and well-being. This is the positive stress. And the another stress is the negative stress. We have referring to when we say stress, it is the form of the stress with the negative implication, and continuously we are the thinking over of the one types of the problem. Only and only we have the simple problem, what we are the thinking again and again, then it will be convert in the form of the perfect. So stress feeling, sometimes we are the worried, tension, tired and frightened, elated, depressed, anxious and the anger. So these are the some common signs we have the consider over. Sometimes headache, insomnia and the fatigue, anxiety, impotence, nervous tick. एक जो मैंने एक वर्ड इसमें यहाँ पर लिखा है, this is the importance. आज की डेट में कई स्टेट में there is the too much types of the stress, anxiety as well as the depression because of this reason, because number of the peoples, they are under the category of the drug addiction. They are consuming lot of alcohol, they are consuming lot of the drugs and so many things, and after that they are the convert in the form of the stress and then in the depression also like that. And nowadays people's anxiety and anger is the gradually increasing day by day. Either it may be the students, or either it may be the teachers, or any types of the person. Even in some of the family person, they are also feeling like that. So how to reduce this one?
we can discuss another slide. So stressor is the stimuli proceeding for the precipitating a change. It may be internal, fear or guilt, or sometimes the external pressure, it may be takes place. Identify the stressor. We have already included so many things which is related to the emotional way, physical, and so many things by the psychologically self. You can find out you are under the stress condition. Your near and dear friends, your family person, they can identify the person. कुछ दिन से चुप रह रहा है, कुछ दिन से बात नहीं कर रहा, कुछ दिन से खाना नहीं खा रहा, कुछ दिन से सोचता रहता. बहुत लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं and sometimes the result declare and result is not up to the mark. तो कई दिनों तक बच्चे के अंदर एक स्ट्रेस चलता रहता है. Unable to explain with the family person, parents, because you know that the expectation of the parents is the high, expectation of the itself of the students is high, and it is very difficult to express. That is why under the condition he or she is the feel like the stress. So potential stress trigger, there are the many potential trigger for the stress, including the increase the responsibility. Sometimes it may be position, major life changes, marriage, divorce, relationship, travel, childbirth, death of the loved ones like that, relocation, financial pressures, job change, natural and man-made distress, and many other factors. मैं अपने पेरेंट्स का आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता हूँ जहाँ पर है फाइनेंशियल प्रेशर. I was belonging one of the very small place. मैंने अपने पिताजी को कभी भी स्ट्रेस में नहीं देखा या कभी भी ये सोचते नहीं सुना कि मुझे कुछ पैसे की नीड है. और मैंने जब उनसे सुना या जो उन्होंने कहा, उन्होंने एक ही चीज मुझे जीवन में कही थी कि यू डोंट टेक एनी टाइप्स ऑफ द लोन फ्रॉम द अदर पर्सन. खास तौर से रिश्तेदार से तो कभी भी नहीं लेना जीवन के, भले ही एक टाइम भूखे बैठे रहो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो यू विल नॉट बी हैप्पी इन योर लाइफ. कोई ऐसी सिचुएशन ना दे ईश्वर. व्हाट most probably this types of the tension take place. अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है, रिश्तेदारों को पता ना लग जाए, घर वालों को पता ना लग जाए, इस टाइप से एक और जन्म ले लेता है और ऑलवेज यू आर अंडर द कैटेगरी ऑफ द स्ट्रेस. आजकल मैरिज के स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, डाइवोर्स के स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, एंड देयर इज द आल्सो जो हमने लिखा है चाइल्ड बर्थ. This is the stress is the also going on. So how to reduce, how to work on it, some point we can discuss in the another slides, and we can find out some of the resolution also. Or जो stress, school, workload, family, there is the so many things that going on. Negative effect on the stress. So how, let us consider if you are taking the positive response, positive impact of the stress, always beneficial. What negative effect on by the stress, it can be give the so many pro and cons on the physical. Weight gain is the going on, unexpected hair loss may be take place, heart palpitation, sometime it can be increased the gradually, emotional things it may be also swing, and it can be also give the lot of stress. So there is the so many things need to work on so that you can reduce the stress. Stress is the both as a psychologically and physiologically response to the change. It does not manifest itself the same way in everyone. मैं फिर से कहता हूं, जिस चीज को मैं स्ट्रेस फील नहीं कर रहा हूं, दूसरा व्यक्ति स्ट्रेस फील कर रहा होगा. आपको एक एग्जांपल देते हैं. एक टीवी चैनल पर था कि अमिताभ बच्चन जी, भीषण गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, पूरा सूट पहने हुए बैठे हुए थे और एक मैगजीन पढ़ रहे थे. उसी समय अक्षय आते हैं, अक्षय खन्ना आते हैं और वो सभी लोगों को डांट रहे होते हैं कि यार व्हाट इज द गोइंग ऑन, क्या कर रहे हो, एसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. एक व्यक्ति ने अंगुली का इशारा किया अमिताभ बच्चन की ओर और वो गए, बोले अरे सर आप इतनी गर्मी में बैठे हो. बोले मैं ड्यूटी में बैठा हूं, मेरी ड्यूटी है, मुझे परफॉर्म करना है मेरे शॉट को, मैं गर्मी में नहीं बैठा हूं. इफ यू फील लाइक दैट, अगर आप काम को काम फील करेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा. अगर आप उसको ड्यूटी फील करेंगे, ये तो करना ही हमें है, तो आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा. That is why it is depend one to one. So same types of the stress, same types of the problem, it is not you can consider in the very thumb rule or like that. But some of the stress position very common, which we are the feeling in our like that. So importance of the stress is I don't want to discuss, and some of the point we have want to discuss with you. So how to we can reduce the stress.
अब आपको स्ट्रेस करने के रिड्यूस के हम कुछ चीजों को डिस्कशन करते हैं. सो वन ऑफ द रिलैक्सेशन टेक्निक्स, अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि लेट अस कंसीडर दिस इज द फोन, ये आपका फोन है या लैपटॉप जिससे मैं बातचीत कर रहा हूं, ये स्लो हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, वी कैन रिफ्रेश इट, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है. अगर हम देखते हैं कि अरे यार ये तो बहुत स्लो चल रहा है हमारा विंडो, तो हम रीलोड करा लेते हैं उसको, फिर से हम लोड करा लेते हैं विंडो को. अगर हम देखते हैं यार फिर भी मजा नहीं आ रहा है, तो हम उसकी रैम बढ़वा लेते हैं, वी कैन इंक्रीज सम ऑफ द रैम. इसके बाद भी नहीं होता है, तब हम कोई नए मॉडल की तरफ सोचते हैं. बट इन केस ऑफ द मेंटल स्ट्रेस, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं, जितने लोग अभी इससे जुड़े हुए हैं, हाउ मेनी पर्सन जिन्होंने अपनी इस रैम पर काम किया हो, जिन्होंने अपने दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए दे डिड सम ऑफ द वर्क इंटेंशनली डेली, जो डेली इंटेंशनली अपनी रैम को, अपने ब्रेन को, अपने स्ट्रेस को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए होमवर्क कर रहे हैं. मैं मानता हूं 2-5% निकल आए तो आई एम थैंकफुल टू द गॉड, बिकॉज द वन क्वेश्चन इज ओ माय गॉड टाइम ही नहीं है, ओ माय गॉड टाइम ही नहीं है, कब करें, कैसे करें. So this is your life, gentlemen. So relax your life, relax your body, relax your mental peace is the very, very important. For this purpose, so many natural techniques, no need medicine, no need consultation, no need to connect with the some of the person who is the giving some particular types of the remedies like a meditation. This is the very, very simple technique. You can do it so that you feel the relax, you feel the fresh, you feel the stress free. डीप ब्रीदिंग, कितने लोग हैं जो पार्क में बैठ करके, मैं दावा करता हूं अगर 80 लोग 90 लोग अभी देख रहे हैं, अगर हैंड्स अप कराएं तो 10 लोग भी नहीं करते हैं कि दे कैन सिट इन द पार्क, एक पार्क की बेंच में बैठ गए हैं और ओनली डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं. नहीं करते. विजुअलाइज सम ऑफ द एक्टिविटी विच आर द फीलिंग. एरोमा थेरेपी इज द वन ऑफ द, जो आपको अच्छे परफ्यूम्स लगते हो, जो जगह अच्छी आपको ठीक ठाक लगती है सराउंडिंग. ऐसा नहीं है फ्लाइट का टिकट लेकर के कश्मीर हो जाएंगे तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे. कितने दिन जाओगे, कब जाओगे, हाउ इट इज पॉसिबल. Sometime it may be possible you can develop some of the tour with your family. So some of the aromatherapy is the nearby, you have some of the park, some of the places, so there you can take rest and you feel that wow and cool effect like that. Sometimes it may be the massive theory exercise like the aerobic, running, swimming, it can be also reduce the stress. What it is the intentionally and take to this one. Anaerobic activity is the walking, stretching and yoga. So this is our own experience. Yoga is one of the, and breathing concept is one of the best remedy to reduce the stress, to increase the power, to increase the capacity, to increase the strength. And also you have the lot of things in your life which you can achieve after the regularly of you can do with the yoga and meditation only like that. Nutritional value, you can take some of the good food. मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नॉन वेज खाइए, नहीं खाइए, लेकिन यस ये मैं अवश्य कहता हूं कि जितना ज्यादा वेजिटेरियन फूड यूज करेंगे, जितना ज्यादा वेजिटेरियन फूड की तरफ मूव करेंगे, उतने ही ज्यादा आप अपने आप को यू फील फ्री फ्रॉम द स्ट्रेस और फ्री फ्रॉम सम ऑफ द डिजीज इवन लाइक दैट. कई बार ये कहते हैं कि स्ट्रेस होता है. अभी एक आया था, एक एग्जाम्पल था, व्हेन वी आर द सिटिंग समवेयर, एक व्यक्ति ने क्या है, आजकल का समय है कि यार थोड़ा थोड़ा तो टेंशन बना ही रहता है. तो जानते हो वो क्या कहने लगे, आपको मैं बताता हूं कि सिंपल रेमेडी है, एक पैक डेली लेने लगी है. मैं एक पैक कई पैकों में ना बदल जाए, परिवार के परिवार नष्ट हो रहे हैं. सो डोंट गिव द नो एनी कंट्रोल वैल्यू, इट हैव नो एनी न्यूट्रिशन वैल्यू, इट कैन प्रोवाइड ओनली द एफोरेटिक इफेक्ट only few seconds, only few hours, and these few hours destroy your life. So take care, gentlemen, because nowadays most of the students, most of the youngsters, they feel that if they are the participating some of the party and consuming the alcohol, they are the very big boss. This is the purely you can say, जिसको हम भ्रम वर्ड कहते हैं, जिसको आपको मिसगाइड वर्ड कहते हैं,
कि आप 2 सीढ़ियां नीचे उतर के आ गए हैं, ईश्वर ना करे कि फिर से आप ग्राउंड फ्लोर पर आ जाए. सो टेक केयर because it will not give the any strength in your life. Sufficient rest is the compulsory. Sometimes it may be not possible, but let us consider Saturday, weekend, take some of the rest, not always work on it like a machine, because our body need some of the recovery, our of the, you can say, body, our parts and various things which are required, some of the rest position, so it will be the helpful to each and everybody. Goal setting, break major project, task done into achievable goal, set milestone for the goal achievement, track progress toward good accomplishment, reward yourself for the progress. मैडम अभी सामने बैठी हैं, मैं हर बार कॉलेज का एक रेजोल्यूशन बनाता हूं. जैसे अभी रेजोल्यूशन है 2020, मैं 3 महीने तक उसको खोल के नहीं देखता हूं. 3 महीने के बाद फिर से रेजोल्यूशन देखता हूं. व्हाई नॉट यू कैन सेट योर गोल. आप अपने थ्रस्ट को इतना मत बढ़ाइए कि इतना वजन ही नहीं उठा पाए. यू कैन टेक ओनली सच टाइप्स ऑफ द थ्रस्ट व्हिच यू कैन फुलफिल. तो उन 22 गोल में से जो हमारे 22 रेजोल्यूशन होते हैं, अगर वी कैन अचीव द 70% और मोर देन दिस, आई वाज द वेरी वेरी हैप्पीएस्ट पर्सन जो हमने 21 का किया है. तो आप अपने जीवन का यू कैन फिक्स सम ऑफ द गोल. उस गोल को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. यू कैन पार्टिसिपेट, यू कैन डिस्कस योर सेल्फ एंड ट्राई टू. ऐसा गोल तय ना करें कि उसको देख देख करके आप स्ट्रेस में चले जाएं. ऐसा कभी भी कोई फिक्स ना करें. सो यू कैन टेक द स्मॉल स्टेप एंड यू विल बी द ग्रो. एक बार डॉक्टर सरनजीत जी ने एक बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिया था और उसका टाइटल था बेबी स्टेप. उसका टाइटल था बेबी स्टेप और उस बेबी स्टेप पर वो 2 घंटे बोले थे. जब उन्होंने हमसे टाइटल डिस्कस किया कि डॉक्टर गुप्ता आई विल गिव द टॉक ऑन द बेबी स्टेप, तो आई सरप्राइज सर इसमें क्या होगा. जानते हो, ही इज द गिवन द जर्नी स्टार्ट फ्रॉम डे फर्स्ट एज ए रिसर्चर कि एक एक बेबी स्टेप इट कैन बी ग्रो एंड एवरीबॉडी नो दैट व्हाट इज प्रोफेसर सरनजीत. तो एक साथ सारी चीजें नहीं हो सकती हैं. आज के आज 25 इम्पैक्ट फैक्टर हो भी गया, देन व्हाट यू कैन अचीव इफ योर कंसेप्ट, इफ योर यू कैन से नॉलेज, इफ योर यू कैन से इंटीग्रिटी, इट इज द collapse right now if you can go very fast. कहीं ना कहीं गलती करोगे. डोंट बिलीव 100% ऑन योर स्टूडेंट. अगर जिस दिन आपको कर दोगे कहीं ना कहीं आप मात खा जाओगे. सो दैट टेक केयर, को सेल्फ चेक करिए, होमवर्क करिए एंड टेक अ ओनली बेबी स्टेप इन योर लाइफ. मैं दावा करता हूं वो बेबी स्टेप एक बार आपको बहुत शीर्ष पर और टॉप पोजीशन पर बिठाएंगे. सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिंप्लीफाई योर थिंग्स, सिंप्लीफाई योर लाइफ, सिंप्लीफाई योर वे ऑफ वर्किंग, सिंप्लीफाई योर टॉकिंग. सो इफ योर लाइफ इज द सिंप्लीफाई, देन it is the also helpful to you. Proactive communication. Let us consider 50 या 80% चीजें हमने सुनी है कि मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने कहीं से जाना है. What types of the things? कई बार लोग आपको कहते हैं मैंने सुना है फला व्यक्ति फला से ये कह रहा था. अब आपसे पूछा कि आप कहोगे कि नहीं नहीं हमारा नाम नहीं आना चाहिए. ऐसी भ्रमित चीजों को और ऐसे बंदों से 100 फीट दूर रहिए. Because they cannot do the some of the, I know that number of the university department, they are destroyed because of this reason. Lose talk, lose communication. Let us consider, if you want to some of the people, you can directly interact, you can directly talk, and you can clarify each and everything. So proactive communication में participate करिए. Because without any, you can say hindrance and without any participation of the third party, third person, you can participate in the proactive communication. Seek counseling for the therapy if this is the more serious problem, and you immediately talk to the doctor. So in a short form of the medicine and short form of the anxiety, you can come over it. Otherwise, it will be sometime very, very dangerous. Deal with the circumstances. Accept करिए. जब कोविड हुआ था उसको बहुत सारे जिन जिन लोगों ने accept किया, they are happy. और जिनने एक्सेप्ट नहीं किया वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए. तो यू कैन अवॉइड द थिंग्स विच आर नॉट suitable to you or which are generating to stress to you. So this is the management. You can deal with the circumstances, deal with the availability, deal with the position, and deal with the situation like that. Then you will be the very happy in your life.
अप्लाई इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल। टाइम हैज नो पिटी नो सिंपैथी। मैं हमेशा कहता हूँ ब्यूटी श्यूटी वर्ड नॉट टच। सुंदरता छू करके पता नहीं लगती है, जैसे मिठाई को छू करके उसकी मिठास पता नहीं लगती है, ऐसा ही हमारा समय है। टाइम हैज नो पिटी एंड नो सिंपैथी। मैनेज द टाइम। बस छूट रही है, बस की गलती नहीं है, आपकी गलती है कि आप टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं। आपके क्लास में, आप कॉलेज में टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं, क्लास में टाइम से आप नहीं पहुंच रहे हैं, डायरेक्टर क्या करेगा? समटाइम इट मे बी द टेक प्लेस। आपकी ट्रू प्रॉपर्टी, ट्रू थिंग्स हो सकती हैं, बट नॉट ऑलवेज। सो अवॉइड द एक्सक्यूज बटन। में हमेशा कहते हैं जितना एक्सक्यूज बटन पर पैर रखेंगे उतना ही आप अपने आप को पुअर फॉर्म में आएंगे, क्योंकि एक दिन एक्सक्यूज बटन काम करना बंद करेगा। तो प्यूरिफाई फॉर्म में काम करिए एंड यू कैन अवॉइड द थिंग्स विच आर नॉट, you can say, related to you. So time management is the most precious everybody life and is the required and useful to each and everybody. So stress management that work for you and other helpful tips I have given like that. This is also available on net. देख सकते हो, relax रहिए, and some of the apps available in the, so you can go through you. Common solution जो हमने बताई है, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका एंड भ्रमरी। ये मैं बाबा रामदेव का भक्त नहीं हूँ, बाबा रामदेव का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीजों को दिमाग से खत्म करिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई स्टेट एडवर्टाइज नहीं है। ये एक मनुष्य की जिंदगी को परफेक्ट बनाने का फॉर्मूला है, और उसको अभी अपन लोग ट्राई कर लेंगे 5-7 मिनट का। इफ यू अलाउ द टाइम वी कैन टेक सम ऑफ द मेडिटेशन। तो योगा, मेडिटेशन एंड प्राणायाम, forget each and everything, it will be the sufficient to you. And if you have more time, some of the exercise, morning walk, laughing therapy नहीं करिए, परिवार के साथ बैठ करके ऐसी कुछ चीजों पर बात करिए जिनसे आप एक दूसरे के विचारों के साथ हंस सकें, अपने होमवर्क के साथ हंस सकें। एंड लाइक डिजॉल्व लाइक, जिस व्यक्ति को आप लाइक करते हो, आपके विचारों को वो लाइक करता हो, उसके साथ आप फ्रेंडशिप करिए। एंजॉय जॉब और बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, दोनों चीज जिसमें भी आए उसको आप एंजॉय करिए। एंड आई होप दैट इट विल बी द हेल्पफुल एंड यू विल द ग्रो एट ए वेरी फास्ट। व्हाट इज नीड, व्हाट यू हैव, इन दोनों को आप बैलेंस कर लीजिए। जिस दिन तराजू बैलेंस हो गया, स्ट्रेस दूर दूर तक नहीं आता है। ये मैं स्लाइड बहुत जरूर दिखाता हूँ। आज जैसे मैं ये ऐनक लगाया हूँ, चश्मा लगाया हूँ, इस स्लाइड को देखने के लिए लगाया हूँ। डोंट डू द डुप्लीकेसी। आज इस ब्रेन पर काम करने की जरूरत है, इसके अंदर क्या चल रहा है उसको देखने की जरूरत है। एवरीबडी नो दैट व्हाट इज द ट्रू एंड व्हाट इज द रॉन्ग, इवन दैट वी आर डूइंग द वर्क एज ए ब्लाइंड। जो लोग अंधे होते हैं वो हमसे 3 गुना ज्यादा देख सकते हैं, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन पावर इट इज द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और हम बाहरी पावर के चक्कर में लगे रहते हैं और सत्य नहीं देख पाते। सो आई एम थैंकफुल टू द गॉड कि जिन लोगों को अगर एक पार्ट से उनको अलग कर देते तो उनको दूसरी स्ट्रेंथ दे देते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वैल्यू, और जो ऐनक लगाना है तो पहले माले पर यूज करें एंड फाइंड आउट द थिंग, इट विल गिव द क्लियरिटी टू यू। हमारे दिमाग में कितना स्ट्रेस या चीजें आ रही है। नीड टू वर्क ऑन ओन, खुद पर काम करने की जरूरत है। डोंट ब्लेम टू अदर, दूसरे पर ब्लेम करना छोड़ दीजिए, खुद पर काम करिए। Do the work on the self and you can feel the stress free like that, and here enjoy your life without harm to anyone. किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपने जीवन को आनंदमय बनाएं, खुशमय बनाएं। इतनी सिर्फ आपके मन में विचार आ जाए, समझ लीजिए you are a perfect person and you are very very useful person, not your family, you are valuable person to the society also. So thank you very much, and I hope that if you have any queries, any question, I will try my best as per our experience, so that we can communicate to each another and come to some of the important points which are useful. आज हम जब पेरेंट्स से बात करते हैं, जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं, हमेशा एक ही सवाल आता है कि भाई बड़े परेशान है, मेरे पता नहीं लगता कि किस चीज के लिए परेशान है। जिस दिन आपने, मैं अपना कहता हूं, जिस बिस्तर पर मैं सो रहा हूं उससे अच्छा बिस्तर दुनिया में कोई नहीं है। जो भोजन मेरी थाली में नमक ज्यादा है, कम है, कच्चा है, पका है, दाल रोटी है या नहीं है, उससे अच्छा कोई भोजन नहीं है। जिस दिन इतना विचार आपके मन में आ जाए, स्ट्रेस आपको दूर दूर तक नहीं आएगा। बट आई नो दैट ये हरदम पॉसिबल नहीं होता है।
फिजिकल चीजों के पीछे नहीं भागिए। और कोविड ने बता दिया है कि मनी विल नॉट प्रोटेक्ट टू यू, आपके शरीर को, आपकी बॉडी को, आपकी फैमिली को एक अप टू सर्टेन लिमिट तक सपोर्ट कर सकती है। अगर ऐसा होता तो कोविड में कोई भी खत्म ही नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा उन लोगों को नुकसान हुआ है जिन्होंने सेल्फ पर नाकाम करके अपनी मनी और बिग हॉस्पिटल, बिग ट्रीटमेंट, बिग थेरेपी की तरफ मूवमेंट किया है और बॉडी का रिस्पॉन्स ठीक नहीं हुआ, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाई और एक एक्सीडेंटल केस हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आज अगर हम 90, 200, 120, 30 बाइक चला रहे हैं और आज हम बच जाए तो कल भी बच जाएंगे। टेक केयर, ये आपका जीवन है। सो यू कैन ड्राइव योर व्हीकल अंडर योर कंट्रोल, अंडर योर लिमिट। इसके अंदर गाड़ी चलाना नहीं है, इसके अंदर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, इसके अंदर आपकी ओन पोजीशन है, इसके अंदर आपकी फैमिली पोजीशन है, सोसाइटी पोजीशन है, जॉब पोजीशन है, बिजनेस पोजीशन है। व्हाट यू हैव, वो सारी पोजीशन है। कंट्रोल योर व्हीकल अंडर योर लिमिट एंड देन यू कैन एंजॉय योर लाइफ थ्रू आउट द लाइफ। ये मेरा अपना मानना है, मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपको एक कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। बिकॉज आई नो दैट ड्यूरिंग द होल ऑफ माई लाइफ व्हाट आई डिड, सिर्फ एक ही चीज पर काम करते रहे कि बस करते रहिए, जो है वो ठीक है। मुझे कभी ये नहीं लगा कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड की शर्ट पहन लूंगा तो मैं भगवान नहीं बन जाऊंगा, जनरल शर्ट पहन लूंगा तो मैं बहुत इंसान से नहीं गिर जाऊंगा। पहले एक अच्छा इंसान बनिए। यू नीड टू अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड यू विल फाइंड आउट दैट कि हर चीज ब्यूटीफाई और अच्छी आपको होती दिखती चली जाएगी और स्ट्रेस डे बाय डे आपसे बहुत दूर होता चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एंड चूंकि टाइम का भी चल रहा था और मैं चाहता था कि शॉर्ट फॉर्म में उसको करें, और जो अभी दिस कैंपस इज द हार्टफुल कैंपस, अगर आप करें तो स्वयं प्रैक्टिस करें। सिर्फ आप जो है डेली बैठ करके 20 मिनट किसी भगवान, देवता, ओम, कोई भी नाम लेने की जरूरत नहीं है। सिट ओनली ऑन द चेयर एंड यू कैन क्लोज योर आई। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। जो आपके विचार मन में आ रहे हैं उन्हें निकलने दीजिए। किसी को बुरा भला बोलने के आ रहा है उसे भी निकलने दीजिए। मुंह से नहीं बोलना है, आपको लगना चाहिए निकल रहा है। अगर आपको रोना आना है रहा है तो आंसू को बह जाने दीजिए। आफ्टर दैट यू फील दैट कि आप जिस तरह से नहा करके फ्रेश होके निकलते हैं बाहर से, वैसे आप अंदर से फ्रेश होकर के बाहर निकलेंगे। और जो अंदर इनसाइड टॉक्सिसिटी, एंजाइटी, विचारों का जो बहुत भरमार हो गई थी, वो कम से कम काफी हद तक निकल जाएगी। क्योंकि व्हेन वी स्टार्ट द मेडिटेशन, तो बहुत से लोगों ने कहा यार मेडिटेशन करते विचार ही इतने आते रहते, क्या आप कहते हो आप प्रतिबिंब दिखेगा, एक प्रकाश सा दिखेगा, वो तो दिख ही नहीं रहा है। जेंटलमैन, एक दिन में कुछ भी नहीं दिखता है, 2 दिन में कुछ भी नहीं दिखता है, महीने में कुछ भी नहीं दिखता, पूरी जिंदगी लगा दो अगर नहीं भी दिखे, डोंट वरी, व्हाट यू कैन डू द प्रैक्टिस। तो आपको अपने अंदर का प्रकाश अपने आप स्वयं दिखने लग जाएंगे। इसका मतलब फोटो दिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ सेल्फ ये है कि व्हाट यू आर द फीलिंग, जो जितनी चीजें आपके अंदर पीड़ा दे रही थी वो बहुत कुछ छट जाएंगी और निकल जाएंगे। आफ्टर दैट यू विल फील द प्यूरिफाइड। एक व्यक्ति ने कहा है, इसका मैं आपको सिंपल सा एक जवाब दे देता हूँ कि जैसे आप कहते हैं यार क्या हो जाएगा मेडिटेशन से, कैसे पता लगेगा, विचार तो रोकते ही नहीं है। अगर आप अपने खेत में दानों को बोते हैं, सीड्स को बोते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने मिट्टी को खोद के देखा है, सीड टेढ़ा है, सीधा है, उल्टा है, तिरछा है? किसी ने नहीं देखा। यू कैन शो द सीड्स, इसके बाद पानी डालते रहते, पौधा बड़ा होता नहीं होता है। जो सही डायरेक्शन में होता है, मॉइस्चर ठीक मिल जाता है, जल्दी बन जाता है। जिसको थोड़ी देर लगती है वो बेचारा थोड़ा छोटा रह जाता है, लेकिन बनता जरूर है। सो स्टार्ट द मेडिटेशन फ्रॉम डे फर्स्ट। योगा को करना थोड़ा सा चालू कर दीजिए तो आप ये फील करेंगे आज नहीं, कल नहीं, परसों तक या 1 महीने 15 दिन के अंदर आपके सिम्टम चेंज होने लगेंगे। आपका बिहेवियर में बदलाव आएगा, बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आएगा, आपके दिमाग का स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, सुनने सोचने की क्षमता अधिक हो जाएगी। जो आप रोज इरिटेट हो रहे थे उसको आप एक्सेप्टेबल भाव में लेने लगेंगे और उसके जवाब पॉजिटिव फॉर्म में देने लगेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। इट मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है किसी के साथ और कुछ हो सकता हो या और प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि दिस इज द ओनली रेमेडी। इफ यू फील एक्चुअल द स्ट्रेस कंटिन्यूअसली, डॉक्टर को कंसल्ट करिए, टेक द मेडिसिन एंड देन इसकी प्रैक्टिस को चालू कर दीजिए।
क्योंकि कभी भी एक जगह स्टॉप हो करके जर्न टू बी देयर। सो थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सर। या मोनिका मैम प्लीज ओवर टू थैंक यू। यू सर। जिस तरह से आपने समझाया, आई थिंक जिस तरह से सबने समझाया, आई थिंक सबने बहुत ज्यादा नॉलेज ली, मतलब फ्रेंडली वे से सबने समझा भी, और टॉपिक के रिगार्डिंग तो समझा ही, आई थिंक और भी बहुत सारी चीजें सबने गॉट करी इससे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले लेते डिजिटल हैं। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ जानना चाहते हो, तो वेलकम प्लीज। और नवदीप जी जानना चाहते हैं कुछ। स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? लिविंग द लाइफ सर। यस यस प्लीज नवदीप जी। सर जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि या स्टार्टिंग के वेबिनार में जो क्रिटिसिज्म है जब हमें मिलता है तो हम उसे ठीक करके हमें अपने इम्प्रूवमेंट मिलता है मतलब इन रिटर्न। सो इससे हम ये भी पॉइंट प्रूव कर रहे हैं कि जितने भी क्रिटिसिज्म है वो ऐसे स्टेट में है कि वो ठीक हो सकते हैं। Am I right? यस यस आप बोलिए, आप अपनी पूरी बात कहें। यस सर। व्हाट इन द केस आपको ऐसे फॉर्म का क्रिटिसिज्म मिले जो क्योर हो ही ना सके, या जिसको क्योर करने के लिए अपने लेवल से ज्यादा एक्सट्रीम प्रोसीजर्स करने पड़े। बिल्कुल ठीक है। देखिए आपने बहुत अच्छी नवदीप बात कही है, और इससे जो प्रश्न है ये लोग दबा के रखते हैं, पूछते नहीं है। इसको क्रिटिक्स के तरह से नहीं लें। आज की डेट में जैसे मैंने कहा ना, फैमिली की जो होता है कि आज एक जहाँ पर एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है, तो इस तरह में जब एक इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं कि जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि डिमांड एंड सप्लाई। आपका एक बच्चा है, हमारे अंदर कई बार ये पीड़ा ये होती है कि एक बच्चे ने कहा कि पापा हमारे पड़ोसी ने एक साइकिल ले ली है और हमें साइकिल चाहिए, और वो गियर वाली साइकिल चाहिए, और वो साइकिल 18,000 रुपए की है। अब आप कहते हैं यार मैं तो 3,000 की सोच रहा था। ये आपको एक पीड़ा देने लगती है। तो एक फाइनेंशियल एक पीड़ा होती है। दूसरी एक पीड़ा ये होती है, कई बार कई लोग बहुत सारी चीजें ऐसी कह देते हैं जो आपके लिए जीवन में बहुत पैनिक कर देती है, पेनफुल हो जाती है। अगर आप ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा सुनेंगे, बहुत ज्यादा समझेंगे, तो ये नासूर बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप इन चीजों को बहुत ज्यादा सुनेंगे और बहुत ज्यादा समझेंगे या बहुत ज्यादा उनके जवाब देंगे, तो वो आपको नासूर बन जाएंगी, और वो नासूर बन के कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान पहुंचाएंगी। और दूसरा व्यक्ति जो आपके लिए बार बार कह रहा था वो और बार बार कहेगा, क्योंकि यही तो होता है। जब कोई व्यक्ति खराब हो रहा है तो एक वर्ड यूज होता है कि अरे यार बड़ा मजा आ रहा है, देखो ये परेशान हो जाएगा। तो इन चीजों से आप बिल्कुल दूर रहिए और इन चीजों को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अगर ये आप इग्नोर नहीं करेंगे तो आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझे कहे कि आप, वो व्यक्ति आपको ये कह रहे थे कि आप बहुत खराब है, तो एक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। हो सकता है मैं उसके लिए खराब हूं, ये अगर मैंने स्वीकार कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और मैं उसको ढूंढने लगूं कि तुम आप क्यों कह रहे थे, तो मैं खराब हो जाऊंगा। ढूंढने की आपको आवश्यकता किसी को है ही नहीं। अगर कोई चीज ढूंढना है तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ को ढूंढो। जिस दिन आपने स्वयं को ढूंढ लिया कि मैं क्या हूं, आप समझ लीजिए आप तरक्की कर रहे हो। जो भी चीज आपके पास में है आप उसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। अगर आप पैदल चल सकते हो और एक व्यक्ति कार से जा रहा है, आप पैदल इसलिए चल सकते हो क्योंकि आप चल सकते हो, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। अब हम कई बार ये पैनिक होने लगते हैं कि यार हमारे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, कुछ घाटे हो गए, कुछ फायदे हो गए। सारी चीजों को दिमाग में इस लेवल पर नहीं लाएं। आज के लिए जो यंगस्टर हैं और जितने बच्चे हैं, बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस चेंज हो गए। इवन छोटे छोटे बर्थडे के जो रिटर्न गिफ्ट होते हैं, उसके लिए मैंने घरों में द्वंद्व को होते हुए देखा है
इसके लिए मैंने स्ट्रेस लेवल को देखा है, इनसे दूर रहिए। जितना आप दूर रहेंगे या इनके बारे में जितना ज्यादा आप, जब तक कोई डायरेक्ट हिट नहीं करती है चीज, आपको रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। डोंट थिंक ओवर इट। यस प्लीज, एनीबडी एल्स? चिंतन करना, हमारी बात पे चिंतन करना। हरमनप्रीत सिंह, हाँ जी हरमन। यस गुड आफ्टरनून सर। सर जैसे आपने अभी बताया कि जो ऐसी सिचुएशंस में हमें इग्नोर करना चाहिए, तो कई बार कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे कई बार हमारे फैमिली में हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो हमारे साथ नहीं होते। उस सिचुएशन में कई बार हमें स्ट्रेस आ जाता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने लोग हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। कोई एग्जाम्पल से बताएं हरमन जी, जैसे, ताकि बिल्कुल आपका सटीक आंसर दूं। जैसे सर हम अपने आसपास हमारे आम सिचुएशन है कि कोई बच्चा कुछ करना चाहता है, जैसे हमारी फैमिलीज में होता है, कोई बच्चा कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन माँ बाप उसे फोर्स करते हैं कि आपको शादी करनी चाहिए, आपकी उम्र हो गई है। ठीक है, अब एक प्रश्न ये आता है हरमन जी कि आप शादी, मान लो आपकी जगह कोई भी, वो क्यों नहीं करना चाहता। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बिल्कुल छोटे गांव का हूँ। जब हमारी शादी हुई तो हमारे माता पिताजी, हमारे पूरे गांव में ये शोर हो गया था कि अब इसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि गांव में तो जो है 18-20 साल में शादी हो जाती थी। और हमारी उम्र के बच्चे जो हमारे दोस्त थे या पड़ोसी थे, उनके 2-2 बच्चे थे। तो हमारी माँ ये रोती थी जब मैं जाते थे कि बेटा तुम्हारी शादी अब होगी नहीं, क्योंकि हम लोग इतने। तो मैं अपनी माँ को यही कहता था कि माँ मैं अपनी शादी 25 साल में करूंगा, जिस दिन 25 साल का हो जाऊंगा उस दिन मैं शादी करूंगा, और तुम्हारे बेटे की शादी होना तय है माँ। तो आप सोचिए, उसने, वो माँ, जब हमारा एंगेजमेंट हुआ, मैंने कभी मैडम से बातचीत की हो, और मैंने ये भी सोच लिया था कि 25 साल की शादी होने के बाद, ये आज के बच्चे वर्ड यूज करते हैं कि सेटल्ड, तो मैंने कहा था मैं सब्जी का ठेला लगाऊंगा, लेकिन सेटल जैसा वर्ड ही नहीं यूज करूं। व्हाट डू यू मीन बाय सेटल? क्या हो जाओगे आप जिसको सेटल्ड कहोगे? तो कई बार पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा हो, लड़का हो या लड़की की उम्र बढ़ रही होती है, तो बच्चे के पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा दबाव उनके ऊपर होता है, क्योंकि वो एक, उनके पास एक ऋण सा होता है कि अपने बच्चों की शादी करके हम इस बोझ से निकल जाएं। बट उनको, जो आप काम कर रहे हो, आप सही मायने में उनको समझाएं कि पिताजी या माताजी, इसमें कई बार बड़ा रोल करती हैं बुआ लोग, और जो नन्हे लोग होती है वो जहर का इंजेक्शन एक लगा जाती हैं कि अच्छा तुम्हारा लड़का मान ही नहीं रहा है, दूसरे दिन से काम चालू। तो ऐसे जहर के इंजेक्शन जब वो लगा जाए तो उनको आप एंजॉय करिए, ठीक है। अपनी माँ को समझाइए, लगता है मामी बता गई आपको, ठीक है, तो वो खुश हो जाएगी। जब वो कहोगे, अच्छा, रेक्ट भाव नहीं करो आप, जब उनको सही चीज फॉर्मेट में आप प्रदर्शित करोगे, जो आप कह रहे हैं ना हरमन, मैं ये जानता हूं 20 से 30% केस जो इंजेक्शन होते हैं ना टेटनस के, जबरदस्ती कोई लगा के चला जाता है और बंदा टेटनस लिए घूम रहा है, अब उसको ये पता है कि दूसरे को हमें लगाना है। तो ऐसे इंजेक्शनों से दूर रहिए, विचारों में क्लियर रहिए। मैंने बताया ना, मैं अपने गांव का, मेरे पिताजी को पता था, मेरे घर वालों को पता था, मेरे रिश्तेदारों को पता था कि बिना हमारी जो पड़ोस के थे मदद के इसकी शादी नहीं हो सकती है, और गांव के लोगों को ये था कि इसकी शादी अब होगी ही नहीं, और माँ पिताजी बड़े टेंशन में रहते थे। लेकिन जब मैंने ऐसी बातचीत की, देन ही इज द वेरी वेरी हैप्पी। और कोई उनसे कहता था तो वो कहते थे कि मेरा बेटा 25 साल का हो जाएगा, उसकी एम.फार्म हो जाएगी, तब वो शादी करेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही लड़की ढूंढने की जरूरत है। तो वो कहते, लगता है कहीं से भगा के लाएगा। तो मैंने अपने आप से वादा किया था कि ऐसा मैं जीवन में नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने परिवार की सबसे छोटी और अंतिम औलाद हूं। क्योंकि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था मेरे लिए, मेरे फादर से ज्यादा कोई एसेट या कोई वैल्यू है ही नहीं, ना थी कभी, क्योंकि वो मेरे, जो चीज उन्होंने मुझे दी है, जो उन्होंने खुद आधा भूखा रह करके मेरा पेट भर के मुझे पढ़ाया, उनसे बड़ा कौन हो सकता है।
तो बस इतना सा आप सोच लीजिए अपने परिवार के लिए, अपनी चीजों को आप बहुत हैप्पी रहेंगे, चाहे शादी हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे आपका कोई टारगेट हो। कई बार बच्चे ऐसा टारगेट रख देते हैं कि मुझे विदेश ही जाना है, बेचारों के पास 2-3 एकड़ जमीन होती है, वो बच्चे को समझाते हैं तुम यहीं रह जा, क्योंकि उनका दिमाग ये नहीं है कि तुम्हें बाहर नहीं भेजना, उनका दिमाग ये है कि सिर्फ इतनी ही जमीन जायदाद है, ये बेच करके अगर इसको सक्सेस रेट नहीं मिली तो क्या होगा। हर पेरेंट्स खुद को गिरवी रख करके अपनी औलाद को बड़ा करना चाहता है, ये हमेशा चेतन रहिए। तो आप एक बार उनके नजदीक आके तो देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि उनको आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। उनकी उम्मीदों को आप अपने लव, अफेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी से साथ जब बात करेंगे तो मजा ही बहुत आएगा। सो आई होप कि आपको को ये समझ लगा होगा और जीवन में आप आगे बढ़े और बड़ी ही सुख शांति से इस पर आप विचार जरूर करें। अच्छा, शुभम जी भी पूछ रहे हैं, टाइम हो रहा है मैडम, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? यस शुभम जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आप वीडियो के थ्रू प्रकट हो सकते हैं। यस सर। हाँ, आप वीडियो चालू करिए और अपना प्रश्न रखो, क्या जानना चाहते हो? सर जैसे आपने बताया कि किसी की बातों को सुन करके हमारे अंदर एक नासूर पैदा हो जाता है, हाँ जी, तो क्या वो नासूर निकल भी सकता है? निकल क्या नहीं, वो नासूर निकल भी सकता है? अरे कि वो या हील हो सकता है? नहीं, आपको ये बताऊं, कांटे से कांटा निकलता है, ये सुना है कभी? कांटे से कांटा निकलता है। तो कभी भी कोई चीज ऐसी आपके अंदर आ जाए, खुदा ना खास्ता, पहले तो उसको आने नहीं दो। कई बार कोई चीज ऐसी आ जाती है, कोई चीज पैनिक कर जाती है। आज यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो ये मोबाइल है ना, व्हाट्सएप और फेसबुक, इसने तो लोगों का जीवन खत्म कर दिया है। कितने ज्यादा लोग स्ट्रेस में आ गए हैं, क्योंकि उस पर क्या क्या लिखते रहते हैं और दूसरे पढ़ते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। और जो इसके बाद उसके ऊपर जो कमेंट होते हैं, जो ऐसे हाथ वाले 25-30 प्रकार के मुंह हैं। एक बार हमने अपनी मिसेस को पूछा कि किसी को मुझे डालना है, कौन सा फेस लूं, तो वो कहती है तुम्हारे बस का रोग नहीं है, कि तुम डालो ही नहीं, सीधा उसको थैंक्स से कहो। कुल मिला करके ये है कि बहुत ज्यादा चीजों को पैनिक फॉर्मेट में लेते रहोगे, ये आपको खराब करेंगी। क्योंकि मैक्सिमम चीजें मैंने कहा ना, फेसबुक, व्हाट्सएप और एक और वो चलता है, क्या बोलते हैं उसको, वो लगाए रहते हैं, उसको लगा लेते हैं रोज, अपनी क्या लगाई, पिक्चर लगा लेते हैं, कुछ फोटो, स्टेटस। ओ माय गॉड, मैंने आज तक किसी का स्टेटस नहीं देखा, मैं देखता ही नहीं हूँ। और आज तक कोई भी बता दे कि मैंने लगाया हो, अरे मैं लगा के क्या हो जाऊंगा, पहले तो ये टेंशन के मैं स्टेटस क्या लगाऊं। अच्छा, आदमी एक कुत्ता पाले, उसका कैप लगा दिया, उसका स्टेटस लगा रहा, क्या करना चाहता है वो। कुल मिला करके ये है, ये आपके जीवन में कई बार किसी को एंजॉय तो किसी को खत्म करने का काम करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। एक व्यक्ति ने इतना बड़ा केक लिया कि मेरा बर्थडे है, मैं इतना बड़ा केक काट रहा हूं, देखता हूं तेरे बर्थडे में केक तू कितना बड़ा लाता है, तो उसके बर्थडे में भी नहीं जाओ और अपना केक लाना ही नहीं, कहना मैं केक काटता ही नहीं हूँ, मेरे को केक से बहुत ज्यादा एलर्जी है, मैं तो वाटरमेलन रखता हूँ, उसका केक बना के काटता हूँ, ठीक है। तो आप जब तक, मैंने कहा लाइक डिजॉल्व लाइक, कांटे को कांटे ही से काट सकते हो, लोहे को लोहे ही से काट सकते हो। जो इस टाइप की विचारधारा के लोग होते हैं, एक बार आप इनको अवॉइड कर देंगे, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, स्पष्टता से बात कर लेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। फिर भी कोई विचार मन में आ जाता है, चाहे वो आपकी उम्र ऐसी है, तो मुझे लगता हो सकता है कोई गर्लफ्रेंड आपके आसपास हो और उससे आप कोई दुखी या विचलित हो, तो आपको दुखी विचलित होने की जरूरत नहीं है। मेरा कंसेप्ट है कि अगर लड़का है तो उसकी शादी लड़की से ही होगी, एक से नहीं तो दूसरी होगी, तो क्यों चिंता कर रहे हो। सबको पृथ्वी पे भेजा है किसी ना किसी के लिए, और जब हमारी शादी हो जाती है हम कहते हैं कि भगवान ने जोड़े बना के भेजे, तो क्यों पंगा ले रहे हो। और यार, अगर जोड़ा बना होगा तो बनना तय है, इसलिए इन पंगों से दूर रहे, कुछ ना कुछ आपके जीवन में सुनिश्चित और अच्छा होने वाला है, ठीक है।
और आज से तुम योगा करोगे, करते हो योगा अभी तो? हाँ, तो आज से आप योगा मेडिटेशन करो, बालों को बढ़िया, अपना बढ़िया, अच्छे बाल हैं आपके, अच्छी सी कंघी अंगी करके निकला करो, महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज हैप्पी फेस तुम्हारा इतना स्माइलिंग है, सब चीज अपने आप आ जाएगी। ठीक है, जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो वो आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू। वेलकम वेलकम। Thank you, sir. Dr. Monika, please continue. Thank you, sir. Yes, sir. Now it's time to present a digital copy of certificate to Dr. G.D. Gupta, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Hard copy will be delivered to you shortly. Thank you so much for sparing your time, sir. Welcome, sir. Always welcome. Now I request. Thank you, sir. Now I request Dr. Rakesh Chawla to propose a vote of thanks. Good afternoon. Good afternoon to one and all. It gives me immense pleasure and honor to present vote of thanks on the success of our webinar on topic pain and stress management. On the behalf of this institution, I would like to extend heartfelt gratitude to our honorable speakers for today's webinar, Dr. Savita Mandhar ma'am, Deputy Director, Medical Education and Research Department, Haryana, and Professor Dr. G.D. Gupta, Director-cum-Principal, ISFCP Moga, for sparing valuable time from their busy schedule. Dr. Savita Mandhar ma'am has elaborately talked on pharmacological and non-pharmacological aspects of pain management. Professor Dr. G.D. Gupta has added spark to this event with such beautiful thought and has enlightened us about the importance of entire well-being and risk associated with high stress levels, their consequences and conquering strategies, and how they are associated with our human system, which can have severe effect on our everyday life activities and can affect our essential systems. So we wholeheartedly value and appreciate your efforts and potentials, which has dignified and added charm to our event. Above and beyond, the backbone of this webinar, our organizing team, distinguished coordinator, Professor Dr. Viney Chawla, Principal, UIPSR, Faridkot, Professor Dr. R.K. Narang, Vice Principal, ISFCP Moga, Dr. Pooja Chawla, Convener, IIC, ISFCP Moga, Ms. Monika, Assistant Professor, UIPSR, Faridkot. We all went an extra mile and made this event a great success. So at last, Dr. Apinder Nagej, Secretary, spur for encouraging such events. So I owe special gratitude to the other teaching and non-teaching staff who has worked hard to ensure that this occasion become memorable event. So I thank all the distinguished invitees present here for accepting our kind invitation. So once again, I thank you all for your kind attentions. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. इजाजत सर, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ, मैं अवेलेबल हूँ फुल टाइम। सभी लोग वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा हो जाएगा। या जस्ट फॉर मेमोरी।